Instagram, YouTube, and don't forget to use the hashtag TNIEC, that's Times Network India Economic Conclave. We would love to hear from all of you. And now, ladies and gentlemen, we have with us a personality who has been actively involved in ensuring that the borders of our country and our citizens remain safe. At a recent event, he spoke about the need to create a technologically advanced military to protect the interests of India. Today, he will share his vision for the future of India as the emerging third superpower. Ladies and gentlemen, please join us in welcoming on stage the Honorable Minister of Defence, Government of India, RAJNATH Singh ji. Can I also invite on stage the MD and CEO of Times Network, M.K. Anand, and Group Editor, Times Network, Editor-in-Chief of Times Now Bharat, Navika Kumar, to welcome and felicitate RAJNATH ji. Please put your hands together. Well, ladies and gentlemen, now to set the context for Day 2 of IDFC First Bank Presents Times Network India Economic Conclave, powered by Google, I'd like to invite M.K. Anand for his welcome address, please. Good morning and a warm welcome to all of you. The Honorable Defence Minister, thank you very much for gracing the occasion. We are very, very happy with the content impact that the conclave has had on day one. I understand that we have over 200 pieces of articles and content pieces that have come across national publications, even beyond the Times of India group, and that I think is great validation of the content that we have been able to, and the discussions that we've been able to have yesterday. Yesterday we were talking about, we started with talking about, putting that whole pin on that thought of India emerging as the third superpower and we becoming the world's largest country by population and various other things. We have discussed economy, policy, and some aspects of the soft power of India with reference to the spirituality, the culture, the music, etc., over and above very, very interesting conversations that we have had in the areas of policy, technology, etc. Today we are going to be talking about a superpower has also got to be able to project hard power. The first half of this conclave second day will be on defense, military and geopolitics, starting with Sri RAJNATH Singh ji, who will give us a very, very deep understanding of India's view on this very, very important subject of military and hard power. After that, towards lunch, we also are going to be hosting Mr. Mike Pompeo, the ex-Secretary of State of the United States, who we feel is had a good ringside view and also would be able to give us an understanding from what the global view is on India's emergence as the third superpower. This is the great second day that we all look forward to. Thank you very much. Have a great conclave. Thank you, Anand, for setting the tone for Day 2 of the India Economic Conclave. And now we request the Honorable Minister for Defence, RAJNATH Singh ji, to deliver the keynote address on Day 2. डायस पर मौजूद श्री M.K. आनंद CEO and MD टाइम्स नेटवर्क, सुश्री नाविका कुमार ग्रुप एडिटर, श्री मेहर भट्ट एडिटर टाइम्स नेटवर्क, और यहाँ मौजूद सभी सम्मानित देवियों व सज्जनों, आई विल डिलीवर माई स्पीच इन हिंदी. इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव के सेशन में आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं अपनी तरफ से आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं. मैं जानता हूं कि इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेव डिफरेंट सेक्टर्स के लोगों के लिए
एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है जिसमें लोग आकर अपने व्यूज़ को शेयर करते हैं तथा इंडिया के इकोनॉमिक एस्पिरेशंस और एक्शंस पर चर्चा भी करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी आयोजकों ने इस सेशन में जो थीम रखी है वह थीम भी मैं समझता हूँ बहुत ही अट्रैक्टिव है, इंडिया द इमर्जिंग थर्ड सुपर पावर। मैं अपनी बात सबसे पहले इस थीम से शुरू करना चाहूँगा जिसकी अभी मैंने आपसे बात की है। साथियों, भारत की इकॉनमी कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है इससे आप सभी अच्छी तरह अवगत हैं। मॉर्गन स्टैनले का नाम आप सब जानते ही हैं, मैं समझता हूँ उसके पहले भी चर्चा हुई ही होगी। मॉर्गन स्टैनले ने 2013 में एक फ्रेज कॉइन किया था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज। फ्रेजाइल का मतलब आप जानते ही हैं कि जल्दी टूट जाने वाली अर्थव्यवस्था, जल्दी बिखर जाने वाली व्यवस्था, यानी दुनिया की ऐसी इकोनॉमीज जो बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही थी उनके लिए यह टर्म मॉर्गन स्टैनले ने यूज़ किया था और उनमें एक नाम हमारे देश भारत का भी था। आज 10 साल बाद वही मॉर्गन स्टैनले अपनी रिपोर्ट में यह कहता है कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी होगी। इसलिए यह थीम तो अपने स्थान पर बिल्कुल सही है कि भारत एक इमर्जिंग इकॉनमी के रूप में जल्दी ही जीडीपी के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंचने वाला है। लेकिन मैं आप लोगों से अपने मन की बात कहूं कि मैं इस थीम के लिए गए वर्ड्स न तो थर्ड पोजीशन को लेकर मैं बहुत उत्साहित हूं और न ही इमर्जिंग सुपर पावर को लेकर बहुत उत्साहित हूं। आज के इमीडिएट पर्सपेक्टिव में तो ये दोनों ही वर्ड्स भारत के लिए सही हो सकते हैं, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखें तो मैं समझता हूं कि भारत एक इमर्जिंग नहीं बल्कि एक रिसर्जेंट सुपर पावर है। हम वापस अपने राइटफुल प्लेस को रिगेन कर रहे हैं। हम दुनिया के इकोनॉमिक नक्शे पर वापस अपना स्थान पाने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, यह कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। जब भारत दुनिया के नक्शे पर एक इकोनॉमिक सुपर पावर के रूप में जाना जाता था, रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 17वीं सेंचुरी तक आते आते दुनिया की जीडीपी में 1/4 से अधिक हिस्सा भारत का हुआ करता था। यह देश इतना आत्मनिर्भर था, जहां प्रोडक्शन इतने बड़े पैमाने पर हुआ करता था कि हम अपनी बाहरी देशों की भी ज़रूरतों को पूरा किया करते थे। क्योंकि उस समय अधिकांश ट्रेड गोल्ड के माध्यम से हुआ करता था, इसलिए हम कह सकते हैं कि गोल्ड माइनिंग चाहे जहां भी हो, गोल्ड कॉइन जारी जहां से हो, पर वह अंततः पहुंचता था तो भारत में ही पहुंचता था। दुनिया भर से लोग हमारे वैभव और संपदा से आकर्षित होकर भारत आते थे, परंतु कालांतर में जैसे जैसे समय गुजरता चला गया, देश के इस वैभव पर ग्रहण लग गया और कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसने हमारे इतिहास को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। इनमें से कुछ का जिक्र मैं करना चाहता हूं। जैसे कि पहली चीज यह थी मिलिट्री वीकनेस और दूसरी थी पॉलिटिकल स्लेवरी। साथियों, भारत का इतिहास इस बात का उदाहरण है कि जब जब भारत में सेनाएं कमजोर हुई हैं, तब तब आक्रांताओं ने भारत को नुकसान पहुंचाया है। सेना किसी भी राष्ट्र के सिर्फ बॉर्डर्स की ही सुरक्षा नहीं करती, बल्कि वह देश की कल्चर, इकोनॉमी और एक प्रकार से देश की इंटायर सिविलाइजेशन की भी सुरक्षा करती है। इसलिए एक सरकार के रूप में हमने यह सुनिश्चित किया कि हमारी सेनाएं सशक्त हों, मजबूत हों, उनके पास अत्याधुनिक यानी मॉडर्न वेपन्स हों और उनमें यूथफुलनेस भी बनी रहे। हमने हर वो कदम उठाया है जिससे भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ बढ़े और हम वापस भारत को एक सुपर पावर बना पाएं। साथियों, पॉलिटिकल स्लेवरी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के माध्यम से हमारी इकोनॉमी को कमजोर किया। मैं समझता हूं इस बात से आप अच्छी तरह सहमत होंगे। इसके साथ ही उसने हमारी आत्मनिर्भरता और कल्चरल प्राइड को भी बेहद
नकारात्मक रूप से प्रभावित किया, जिसके बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं और बहुत ज़्यादा इस पर बात करने की मैं समझता हूँ आवश्यकता नहीं है। लेकिन समय अब करवट ले रहा है, हम उस पॉलिटिकल स्लेवरी से अब बाहर आ चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस बार लाल किले के प्राचीर से देश को जो 5 प्रण दिए थे, उनमें से एक प्रण यह भी था कि हमें गुलामी की मानसिकता को निकाल फेंकना है और आज देश पूरी तरह गुलामी की मानसिकता को हटाकर एक मजबूत नेतृत्व के साथ वापस अपना स्थान पाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। साथियों, भारत के लिए मैं समझता हूं कि यह पुनर्जागरण रिनोवेशन का यह दौर है। यह ग्लोबल सुपर पावर के रूप में भारत की पुनर्स्थापना का समय है। अंधेरा छट चुका है और नए भारत का नया सूर्योदय हो रहा है। इसलिए मैं इमर्जिंग सुपर पावर से ही इत्तेफाक नहीं रखता हूं, बल्कि मैं भारत को एक रिसर्जेंट सुपर पावर के रूप में देखता हूं। साथियों, आपने दुनिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म से यह बात सुनी होगी कि 21वीं सदी 21st सेंचुरी यह भारत की है। 21वीं सदी को भारत की सदी बताने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि तमाम हर्डल्स के बावजूद आज भारत इकोनॉमिक दृष्टि से दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। जब से 2014 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब से हमारा यह प्रयास रहा है कि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी देश में इकोनॉमिक ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट करें। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं, हमने क्या अचीव किया है अपनी पॉलिसीज के माध्यम से। बात चाहे डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म की हो या फिर जीएसटी की, हमने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक ऑप्टिमम एंड टैक्स पेयर फ्रेंडली रिजीम लाने का पूरा प्रयास किया है। हमारे प्रयास, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं कि रंग भी ला रहे हैं। बीते फाइनेंशियल ईयर में आपने देखा होगा कि इनकम टैक्स हो या फिर जीएसटी, इनका जितना कलेक्शन हुआ है उसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं की गई थी कि इतना कलेक्शन हुआ होगा। और इस बार जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है उससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। जहां तक मेरी जानकारी है 1.87 लाख करोड़। आप सभी एक अच्छी खासी इकोनॉमिक समझ रखने वाले यहाँ पर लोग बैठे हुए, और आप तो जानते ही हैं कि यदि कोई बिजनेस हाउस किसी भी देश में इन्वेस्ट करता है तो देश की पूरी इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज एवं चैलेंजेज का अच्छे से एनालिसिस करता है, उसके बाद ही उस देश में वह इन्वेस्ट करता है। आज भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने पर सरकार ने बल दिया है और इसलिए फॉरेन इन्वेस्टर्स भारत को एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के रूप में देख रहे हैं। सिर्फ इकॉनमी ही नहीं, बल्कि जब आप इकॉनमी के अलावा बाकी के सेक्टर्स को देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमने उनमें एक रिवॉल्यूशनरी ट्रांसफॉर्मेशन किया है। साथियों, एजुकेशन में आप देखिए कि हमने नई शिक्षा नीति के माध्यम से किस प्रकार लर्निंग एंड स्किलिंग को मल्टी डायमेंशनल वे में एड्रेस किया है। हमने शुरुआत से ही बच्चों को उनकी स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ उनमें नैतिक रूप से भी सशक्त बनाने के लिए, मॉरली स्ट्रांग बनाने की दृष्टि से भी हमने काम करना प्रारंभ किया है। हेल्थ सेक्टर पर जब आप नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान किस प्रकार हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाते हुए मोर देन 200 करोड़ अधिक वैक्सीन अपनी पूरी जनता को लगाने में कामयाबी हासिल की है। और इस प्रकार की सक्सेस वैक्सीन ड्राइव दुनिया के किसी भी देश में नहीं चली है जैसी हमारे और आपके देश भारत में चली है। और इसके अलावा हमने आयुष्मान भारत के माध्यम से करोड़ों बेनिफिशियरीज को कवर करते हुए पूरे हेल्थ सेक्टर में एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज लाने का भी कार्य किया है और उसमें हमको कामयाबी हासिल हुई है। अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि यहाँ दुनिया भर में कई देशों में, यहाँ तक कि जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें भी बैंक्स की परफॉर्मेंस इस समय अच्छी नहीं है। वहीं भारत के बैंक्स आज बेहद मजबूत स्थिति में हैं। मैं इसके पहले 1-2 देशों में जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है
और मैंने देखा कि जब वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जब मुझसे इस बात की चर्चा करते हैं हमारे बैंक्स के परफॉर्मेंस की, तो मेरा सीना स्वाभाविक रूप से मित्रों चौड़ा हो जाता है। 2014 में अनेक बैंक्स एनपीए के तले दबे हुए थे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के इस बोझ के तले दबे हुए थे। हमने बैंकों की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर कई इनिशिएटिव्स उठाए हैं। बैंक्स को मर्ज करके या फिर उनका प्राइवेटाइजेशन करके हमने उनका रिवाइवल किया है, और उन प्रयासों का ही नतीजा है कि आज हमारे बैंकों का ग्रास एनपीए काफ़ी निचले स्तर पर है। घटते एनपीए के कारण बैंक्स आज कर्ज देने की यानी क्रेडिट प्रोवाइड करने की स्थिति में हो गए हैं। हमारा क्रेडिट ऑफटेक बढ़ा भी है। ग्रास एनपीए 27-18 में जहां पर 9.33% था, अब वह 4.5% हो गया है। और साथियों, इसके अलावा हमने इस देश की एक और बड़ी समस्या पर सरकार में आते ही विशेष रूप से फोकस किया है। जब हम सरकार में आए, हमने देखा कि देश में बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो कि बहुत ही पुराने हो चुके हैं। उनका एक बहुत बड़ा जाल था, और उसमें फंसकर न तो इस देश में बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो पाते थे उन कानूनों के कारण, और न ही देश में इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट बन सकता था। इसको भी हम लोगों ने समझा। इसीलिए हमारी सरकार ने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांत को फॉलो करते हुए 2000 से अधिक पुराने कानूनों को समाप्त करने का भी काम किया है। और इस प्रोसेस के माध्यम से हम लाल फीताशाही को कम करते हुए इंस्पेक्टर राज के खात्मे की ओर भी तेजी से बढ़ रहे हैं। देश का रक्षा मंत्री होने के नाते अगर मैं भारत के डिफेंस सेक्टर की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित करूं, तो आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में हमने इंडिया के डिफेंस सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की इंस्पिरेशन से हमने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ साथ डिफेंस सेक्टर में भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने की दिशा में तेजी के साथ काम कर रहे हैं। हम पहली ऐसी सरकार हैं जिसने हथियारों के आयात यानी इंपोर्ट के लिए खुद पर ही प्रतिबंध लगा दिया। हमने सेनाओं की ओर से 411 आइटम्स की एवं डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की 4666 आइटम्स की पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की है, और इसमें शामिल लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट्स, हथियार, गोले, बारूद, मिसाइल और अन्य प्रकार के रक्षा से संबंधित साजो सामान हैं, जिनका निर्माण अब केवल और केवल हमारे ही देश में होगा। हम किसी भी सूरत में दुनिया के दूसरे देशों से हम इंपोर्ट नहीं करते। हमने साफ कह दिया है, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। भारत में बनाओ, भारतवासियों के हाथ से बनाओ, सारी दुनिया के लिए बनाओ। साथियों, हमने मेक इन इंडिया और डिफेंस कॉरिडोर्स जैसे इनिशिएटिव्स के माध्यम से इंश्योर किया है कि हम भारतीय सेनाओं के यूज के लिए मॉडर्न वेपन्स भारत में ही निर्मित करें, और यदि संभव हो तो हम उसे एक्सपोर्ट भी करें। आज आप देख सकते हैं कि अब हम अपने इन प्रयासों में कामयाबी हासिल कर रहे हैं, जिसे इस आंकड़े से समझा जा सकता है कि आज हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मोर देन 1 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। जब मैं डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली हमारी इंडस्ट्रीज हैं, जब मैं उनके साथ बैठकर कभी चर्चा करता था और जब मैं यह कहता था तो लोग यकीन नहीं करते थे कि असंभव हो पाएगा। यह करिश्मा भारत में हुआ है। अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूं तो आज से 7-8 वर्ष पहले डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट, जहां कुल मिलाकर 9,500 करोड़ हुआ करता था, आज वह बढ़कर मोर देन 16,000 करोड़ हो गया है। साथियों, डिफेंस सेक्टर के मामले में अभी हमें और कई रास्ते तय करने हैं, लेकिन यह एक बहुत बड़े लक्ष्य की ओर हमारा ये पहला कदम है। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी स्टार्टअप्स के माध्यम से न्यू आइडियाज़ को इनवाइट किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में यूनिकॉर्न्स की संख्या 100 से अधिक हो गई है, लेकिन इनमें भी एक अच्छी खासी संख्या उन स्टार्टअप्स की है
जो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं। साथियों, अगर मैं बात करूं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, तो आप देखिए कि किस प्रकार हमने भारत की में सड़कों का जाल बिछाया है। हमारे नितिन जी आए होंगे, इस संबंध में आपको बताया होगा उन्होंने। लेकिन मैं बॉर्डर एरियाज़ की यहाँ पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ। लेकिन इसके पहले मैं बता दूँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, जहाँ पहले बामुश्किल 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पर डे ये हाईवेज बना करती थी, आज 37 किलोमीटर पर डे हमारी हाईवेज बन रही हैं। ये अपने में करिश्मा नहीं है तो क्या है। बॉर्डर एरियाज में भी स्थित हमारे जिन गांवों को आज तक इग्नोर किया गया था, हमने उन्हें भी सड़कों के माध्यम से देश के बाकी क्षेत्रों से जोड़ा है। और अगर आप एयरपोर्ट्स की संख्या पर गौर करें तो 2014 के कंपैरिजन में आज हमारे पास 2 गुणों से अधिक एयरपोर्ट हैं। पहले जहां केवल 74 हुआ करते थे, आज उनका नंबर बढ़कर 148 हो गया है। हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज से यात्रा कर सके, इस संकल्प के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। रेलवे में आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। विश्व स्तरीय ट्रेन सुविधा हमारे देशवासियों को उपलब्ध हो सके, यह हमारा प्रयत्न है। और आपको जानकारी होगी उस फिगर के बारे में कि विश्व स्तरीय ट्रेन जो वंदे भारत है, वंदे मातरम है, हम इसको भी वंदे भारत लगभग उसका नंबर संभवतः 21 तक पहुंच चुका है। रेलवे स्टेशन के निर्माण से लेकर वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाकर इंडियन रेलवेज की तस्वीर हमारी गवर्नमेंट ने बदली है। पीएम गति शक्ति के तहत हम देश के रोड्स और रेलवे को सी पोर्ट से जोड़ रहे हैं। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं बल्कि कम्युनिकेशन को भी प्रायोरिटी देते हुए हम पूरे देश के हर पंचायत को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके और जल्द ही हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, जितना इस सेक्टर के बारे में मैं जानता हूं और जितनी तेजी के साथ काम हो रहा है उसे देखते हुए। इसके अलावा बीते दिनों आपने देखा होगा कि हमने देश में 5G लॉन्च किया है और यह डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ता हुआ हमारा अब तक का सबसे बड़ा कदम है। साथियों, मैं चाहता हूं कि हमारा देश इतना सुंदर हो, हमारे यहाँ के पार्क्स, मैदान, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स इतने सुंदर और साफ हों कि अगर कोई भारतीय दूसरे देश में जाए, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या जापान जाए और वहाँ एडवांस्ड रेलवे स्टेशंस देखे, फ्लाईओवर्स का जाल देखे, पार्क्स, मैदान, रोड्स, मॉन्यूमेंट्स देखे, तो कहे कि ये सारे चीज़ें तो दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसी हैं। दुनिया के देशों में जाए तो उनको देखकर यह कहे कि ये कोई खास बात नहीं है, ये तो हमारी दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसी है। साथियों, कुल मिलाकर कहें तो हम देश के लगभग सभी सेक्टर्स पर फोकस करते हुए 2047 तक विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया की इमारत खड़ी करने का काम कर रहे हैं। और आज सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस हकीकत को स्वीकार करती है। और आप लोग भी शायद मेरी बात से सहमत होंगे कि आज के कुछ वर्षों पहले भारत इंटरनेशनल फोरम पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए उतनी गंभीरतापूर्वक नहीं लिया जाता था। लेकिन आज भारत का स्टेचर दुनिया की नज़रों में इतना बढ़ा है कि भारत यदि आज इंटरनेशनल फोरम पर कुछ भी बोलता है तो लोग कान खोलकर सुनते हैं कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बनी है। साथियों, जब भी हम कोई मंजिल निर्धारित करते हैं, अपने लिए हम कोई उद्देश्य तैयार करते हैं और यूं तो इसके साथ कई सारी समस्याएं आती हैं, स्वाभाविक भी है, लेकिन उनमें भी 2 सबसे बड़ी चुनौती जो सामने आती है, पहली तो यह होती है कि हो सकता है दुर्भाग्य से हम वह लक्ष्य उस समय सीमा में प्राप्त ही न कर पाएं। लेकिन जो दूसरी बड़ी चुनौती होती है वह यह होती है कि जब हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें वह लक्ष्य उतना रिलेवेंट नहीं लगता है। हम ये सोचने लगते हैं कि क्या इसी उद्देश्य के लिए हमने इतनी मेहनत की थी, इतना परिश्रम हमने किया था। इसलिए हमारे लिए यह बेहद आवश्यक है कि हम वैसे ही मंजिल अपने लिए निर्धारित करें
वैसा उद्देश्य स्वयं के लिए तय करें जिसकी प्राप्ति के बाद हमें संतुष्टि मिले, हमें प्रसन्नता की अनुभूति हो। इसलिए आज मैं उन मुद्दों पर भी आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि हमारे लक्ष्य कैसे होने चाहिए, हमारा उद्देश्य कैसा होना चाहिए। मैं कहीं पढ़ रहा था कि बी केयरफुल विद योर ड्रीम्स, दे माइट कम ट्रू। और इस बात को समझने की जरूरत है, हमें यह तय करने की जरूरत है कि हमें कैसे भारत का सपना देखना है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं आपसे अपने सपनों के भारत पर यहां मैं थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। इसे आप एक प्रकार से मैनिफेस्टो फॉर 2047 भी कह सकते हैं। और मैं आपसे इस मुद्दे पर बात करना चाहूंगा कि मैं 2047 तक भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक भविष्य को किस प्रकार से देखना चाहता हूं। साथियों, यदि हम भारत के सामाजिक विकास की बात करें तो मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करता हूं जहां समाज में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो। वैसे तो संविधान आज भी यह व्यवस्था करता है, देश में धर्म, जात, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव न हो, लेकिन हमारा विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया, इस थ्योरी से भी एक कदम आगे होना चाहिए, यह हमारी कल्पना है। जहां कोई किसी भी जाति में जन्म ले, जहां कोई किसी भी जाति में जन्म ले, उसे स्वयं के विकास के लिए बराबर का अवसर मिले। जहां जात के आधार पर किसी को अवसरों से वंचित न रखा जाए। ऐसी कोई भी मजबूरियां, ऐसी कोई भी बेड़ियां जो ह्यूमन डिग्निटी को कमजोर करती हैं, वह टूटनी चाहिए। जहां ह्यूमन डिग्निटी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। और यह हमारी टॉप प्रायोरिटीज में से एक प्रायोरिटी है। साथियों, मेरे मन में एक बात कई दिनों से है और हमारे सामने कई बार ऐसी खबरें भी आती हैं जिसे पढ़ या सुनकर हमारा हृदय भी द्रवित हो उठता है। स्वाभाविक रूप से आप सब भी संवेदनशील प्राणी हैं, इमोशनल प्राणी हैं, आपको भी तकलीफ होती होगी। उदाहरण के लिए आपने भी देखा होगा कि कभी आज के कुछ ही दिन पहले मैंने देखा था किसी चैनल पर कोई व्यक्ति अपने परिवार किसी सदस्य के निधन होने के बाद, और एक व्यक्ति को मैंने देखा कि अपने नौजवान बच्चे के निधन होने के बाद वो अपनी बच्चे की लाश को साइकिल पर ढोते हुए जा रहा है। और कई बार तो मैंने देखा है वह दृश्य भी, उन्हें साइकिल भी नसीब नहीं होती और शरीर कंधे पर ले जाते हुए मैंने यह भी खबरें पढ़ी हैं। बड़ी ही हृदय विदारक यह घटना होती है, पर हमारे समाज की दुर्भाग्यपूर्ण सच्चाई है यह जिसे हमें स्वीकार करना होगा और यह स्वीकरण ही इससे निजात के रास्ते खोलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए जब मैं 2047 के भारत की कल्पना करता हूं तो उसमें मैं किसी भी स्थिति के 3 स्वरूप देखता हूं। पहला, कि मेरे भारत में कोई भी इतना अक्षम न हो कि अपने किसी परिजन के मरने पर उसे लाश को साइकिल पर या कंधे पर ढो कर ले जाना पड़े। दूसरा यह कि दुर्भाग्य से कोई इतना सक्षम न हो तो सरकारी व्यवस्था इतनी मजबूत और संवेदनशील हो कि उस व्यक्ति के स्थान पर व्यवस्था ही काम करे। तीसरा यह कि कई बार दूर दराज के क्षेत्रों में जहां सरकारी तंत्र नहीं पहुंच पाता तो वहां समाज में इतना भाईचारा हो कि अगर किसी व्यक्ति पर ऐसी आपदा आ जाए तो समाज का जो भी पहला व्यक्ति उसे देखे वह अपने बाकी काम छोड़कर उस व्यक्ति की सहायता करे। भाइयों बहनों, मैं इस प्रकार का संवेदन से परिपूर्ण एक ऐसा समाज भारत में देखना चाहता हूं। और इसके अलावा, और यह बात मैं अपने प्रधानमंत्री के बारे में कह सकता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के पहले भी हमारी चर्चा होती रही है, पार्टी का जब मैं अध्यक्ष था उसमें भी चर्चा होती रही है, आज भी समय समय पर उनके साथ जो बैठकर चर्चाएं होती हैं ऐसी बातें निकल कर आती हैं, इसीलिए हमने उसको अपने स्पीच में कवर किया है। इसके अलावा जो चीज़ मैं अपने इस डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत में देखना चाहता हूं वह है महिलाओं की बराबर की भागीदारी। साथियों, कोई राष्ट्र बिना अपनी आधी आबादी के साथ लिए प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। हमें नारी शक्ति को उतना अधिकार देना होगा, हमें उन्हें वह अवसर देने होंगे जिस अवसर से उन्हें लंबे समय से वंचित रखा गया था।
अभी आपने देखा होगा कि सिविल सर्विसेज एग्जाम के परिणाम में किस तरीके से बेटियों ने अपनी बाजी मारी है। टॉप 25 में से 14 वीमेन कैंडिडेट्स का होना देश के सुनहरे भविष्य की प्रति एक बहुत बड़ा संकेत है। महिलाओं ने तो ताली बजा दी, लेकिन पुरुषों ने सब नहीं बजाई। हम चाहते हैं कि महिलाओं का भी प्रश्न हो तो सभी साथ साथ ताली बजाएं। हम जितने ज़्यादा अवसर अपनी बेटियों को देंगे, जितनी सुविधाएं बेटियों पर केंद्रित करेंगे, वे हमें उससे कई गुना लौटा कर देंगी। मुझे पक्का विश्वास है, और वो देश को और एक नई ऊंचाई पर ले जाने में के लिए अपना पूरा योगदान देंगे। इस बार लाल किले के प्राचीर से हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी देश को यह संदेश दिया है कि अगर हमें विकास के नए आयाम गढ़ने हैं तो हमें अपने देश की महिलाओं को साथ लेकर चलना होगा। हमें अपनी बेटियों को पर्दा से निकालकर प्रतिस्पर्धा में लाना होगा। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, हमें अपनी बेटियों को पर्दे से निकालकर प्रतिस्पर्धा में लाना होगा। और इस आयोजन में मैं महिलाओं की प्रेजेंस भी देख रहा हूं, और मैं आपसे सीधा संवाद करते हुए फिर से कहता हूं कि आप लोगों को गुलामी के प्रतीक पर्दा की नहीं, बल्कि बराबरी के प्रतीक प्रतिस्पर्धा की मैं कामना करता हूं। तभी महिलाएं स्वयं का विकास कर पाएंगी और राष्ट्र निर्माण में भी अपनी वो भूमिका निभा पाएंगे। साथियों, तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूं वह रोजगार से संबंधित है। हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना होगा जो रोजगार के उचित अवसर उत्पन्न करे। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है, और इस जनसंख्या से हमें लाभ तो होगा, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि हमें इस विशाल जनसंख्या को एक हाई क्वालिटी लाइफ देने के लिए अपने इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी को और इन्हांस करना ही होगा। हमारे पास युवाओं की एक विशाल संख्या होगी और उनके अनगिनत सपने भी होंगे। नौजवानों के अपने अपने ड्रीम्स होते हैं, हर नौजवान के बहुत ऊंचाई उड़ान भरने की उनकी जिद होगी। इसलिए हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम ऐसा इन्वायरमेंट तैयार करें जो उनकी उड़ान को और ऊंचाई दे पाए। मैं चाहता हूं कि हमारे युवा शिक्षित हों, स्वस्थ हों और उनमें काबिलियत डेवलप की जा सके और उन्हें उनकी काबिलियत के अनुसार रोजगार के अवसर मिल सके। साथियों, हमें एक ऐसे इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, हमें एक ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए जिसमें हमारे पास एक इफिशिएंट मार्केट इकोनॉमी हो, जिसमें लोगों के पास इकोनॉमिक फ्रीडम हो, कोई भी व्यवसाय शुरू करने की भी फ्रीडम हो, कोई भी नौकरी करने की भी फ्रीडम हो, ताकि वे बड़े सपने देख सकें, इनोवेटिव आइडियाज भी वह सोच सकें। इसके अलावा हमें उन लोगों के बारे में भी सोचना होगा जो किसी बीमारी बस फिजिकल या मेंटल इलनेस के कारण या किसी पारिवारिक कारणों से दुर्भाग्य से अपने स्वप्नों को वह पूरा न कर सकें। उनके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए भी हमें अपनी तरफ से उचित प्रयास करने ही होंगे। मैं इसे दूसरे शब्दों में कहूं तो हमें एक वेलफेयर स्टेट का निर्माण करना ही होगा। एक ऐसा वेलफेयर स्टेट जो अपनी जनता के लिए हाई क्वालिटी न्यूट्रिशन, हाउसिंग, एजुकेशन एवं हेल्थ केयर की व्यवस्था कर सके और इस तरह की सोशल सेफ्टी नेट प्रोवाइड कराने के लिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही सेक्टर्स को मिलकर काम करने की ज़रूरत होगी। साथियों, यदि मैं भारत के राजनीतिक भविष्य की यदि बात करूं तो मेरी इच्छा है कि जैसे जैसे हम भविष्य में आगे बढ़ते जाएं वैसे वैसे हमारा लोकतंत्र सदैव मजबूत होता जाए, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स खत्म होती जाए और हमारा देश क्रेडिबल पॉलिटिक्स के मार्ग पर आगे बढ़े। यहाँ पर यदि मैं क्रेडिबल पॉलिटिक्स की बात करता हूँ तो पॉलिटिशियंस के वर्ड्स और डीड्स में भी अंतर नहीं होना चाहिए, उनके कृति और कथन में अंतर नहीं होना चाहिए। पॉलिटिशियंस को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जो वह कहें वह करें। राजनीति को जनता की सेवा का एक माध्यम समझा जाना चाहिए और साथियों, हमारे देश में कई सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं। जाहिर सी बात है, राजनीतिक दल लोकतंत्र की ये धुरी होती हैं। साथियों, बिना पॉलिटिकल पार्टीज के डेमोक्रेसी सर्वाइव ही नहीं कर सकती है, लेकिन हमारे देश के कई राजनीतिक दलों में यह देखने को मिलता है कि वह किसी विचारधारा, किसी आइडियोलॉजी पर अथवा किसी विचारधारा से इंस्पायर होकर वह राजनीति नहीं करते।
बल्कि उनकी राजनीति किसी व्यक्ति व किसी परिवार या किसी जात के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को आपने देखा होगा। मैं समझता हूं कि एक विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया में ऐसी राजनीति का कोई स्थान नहीं रहना चाहिए। राजनीति परिवार, धर्म और जाति के आधार पर न होकर विचारधारा और मूल्यों के आधार पर, यानी आइडियोलॉजी और वैल्यूज के आधार पर पॉलिटिक्स होनी चाहिए। साथियों, आजकल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग लोकल बॉडी के चुनाव में भी अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मैं ऐसे ही भारत का निर्माण चाहता हूं जहां हमारी लोकल बॉडीज भी पर्याप्त रूप से सशक्त हो, जहां राज्य सरकारें लोकल बॉडीज तक पावर का एप्रोप्रिएट ट्रांसफर करें। ठीक उसी प्रकार केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच भी ऐसे रिश्ते हों, ऐसे संबंध हों जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को वह बढ़ावा दें। सरकार और नागरिक के संबंध भी इतने अच्छे हों कि जहां सत्ता की तरफ से नागरिकों के अधिकारों का सम्मान हो, तो वहीं नागरिक भी समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का अच्छी तरह निर्वहन करें। और साथियों, इसके अलावा जब हम सांस्कृतिक रूप से भारत के भविष्य की कल्पना करते हैं, मैं यहाँ सांस्कृतिक रूप से भारत के भविष्य की चर्चा करना चाहता हूँ। सांस्कृतिक रूप से भारत के भविष्य की कल्पना करते हैं तो हमारे मन में एक ऐसा भारत आना चाहिए जहाँ के नागरिक अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता पर गर्व करें, जहाँ हमारे प्राचीन मूल्यों का सम्मान होना चाहिए, साथ ही नए विचारों का स्वागत भी होना चाहिए, जहाँ महिलाओं और बुजुर्गों का सम्मान हो। मैं भारत की संस्कृति को गंगा की तरह प्रवाहमान देखना चाहता हूँ। आप देखिए कि गंगा में न जाने कितनी छोटी बड़ी नदियाँ मिलती हैं, डिफरेंट सोर्सेस से जल आकर गिरता है, लेकिन इसके बावजूद गंगा का एक यूनिक एग्जिस्टेंस बना हुआ है। मैं भारतीय संस्कृति को भी उसी रूप में देखना चाहता हूँ, जहाँ हम दूसरी जगहों से भी अपने लिए अच्छे विचार लें, लेकिन अपनी संस्कृति को बनाए रखें। हमारे यहाँ कहा भी गया है, अनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वतः, अर्थात सभी ओर से हमारे लिए जो समाज के लिए कल्याणकारी हों वह विचार आएं। साथियों, सांस्कृतिक रूप से मैं एक ऐसे भारत का निर्माण चाहता हूं जहां हमारी शास्त्रीय और लोक कलाओं का वही सम्मान मिले, उनका वही स्थान हो जो स्थान विश्व की श्रेष्ठतम कलाओं को मिलता है। साथियों, यदि कोई माइकल जैक्सन के डांस स्टेप्स के बारे में जाने, यदि कोई भारत का रहने वाला नागरिक माइकल जैक्सन के डांस स्टेप्स के बारे में जाने, तो वह हमारे भारतनाट्यम और कथकली जैसे भारत शास्त्रीय नृत्यों को भी जानकारी रखे। सिम्फनी, ओपेरा और बीथोवन के म्यूजिक को जो स्थान मिलता है, वही स्थान हमारे शास्त्रीय संगीतों को भी मिले। हमारे कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत की धुन पर पूरी दुनिया गुनगुनाए। हाँ, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि यह सब प्रयास सिर्फ सरकार के जिम्मे न हो। सरकार तो अपने स्तर पर प्रयास कर ही रही है, लेकिन मैं इसमें एक व्यापक जन सहभागिता, जन समर्थन भी मैं देखता हूँ। साथियों, मैं चाहता हूँ कि BTS, एक साउथ कोरियन ये पॉप बैंड, इससे आप अच्छी तरह परिचित होंगे। मैं चाहता हूँ कि BTS के बारे में जानने वाला हमारा नौजवान तानसेन को भी उतना ही जाने। नेपोलियन के बारे में पढ़ने वाला हमारा नौजवान समुद्रगुप्त की विजय यात्रा के बारे में भी वह जाने। शेक्सपियर के हैमलेट के पढ़ने वाला हमारा नौजवान भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के बारे में भी जाने, और कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम को भी उतना ही जाने। यह हमारी सोच है, यह हमारी कल्पना है। साथियों, हम संस्कृति के स्तर पर दुनिया से विचारों का आदान प्रदान करते रहे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से योग और आयुर्वेद को हमने एक वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास किया है, और मैं कह सकता हूं कि इस दृष्टि से भारत को कामयाबी हासिल हुई है। और इसमें इनिशिएटिव लिया है तो हमारे प्रधानमंत्री ने लिया है। हम लगातार भारत की सांस्कृतिक पहचान को एक नई ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, और मैं भविष्य में भी वैसे ही भारत को देखना चाहता हूं, जहां उसकी एक सांस्कृतिक संप्रभुता, कल्चरल सॉवरेंटी, यह स्थापित हो। अंत में मैं इस बात का यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा मेरे साथियों कि हमारा विकसित भारत, यानी हमारी डेवलप्ड इंडिया, शेष दुनिया के लिए कैसी होनी चाहिए। साथियों, हम जब से स्वतंत्र हुए तब से ही हम दुनिया भर में रेसिज्म, कॉलोनियलिज्म, साम्राज्यवाद और युद्ध की विभीषिका जैसी ग्लोबल इविल्स के खिलाफ बराबर आवाज उठाते रहे।
लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सल वैल्यूज हैं जो किसी एक देश के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए हुआ करती हैं। इसलिए एक विकसित भारत के रूप में हमारी जिम्मेदारी इससे कहीं अधिक बढ़कर होगी। स्पाइडरमैन मूवी का एक डायलॉग आपने सुना होगा, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए जब हम एक सुपर पावर के रूप में दुनिया के सामने आएंगे तो हमें यह इंश्योर करना होगा, फिर से अपनी बात को दोहराना चाहता हूं, जब हम एक सुपर पावर के रूप में दुनिया के सामने हम आएंगे तो हमें यह इंश्योर करना होगा कि डेमोक्रेसी, धार्मिक स्वतंत्रता, मानव की गरिमा और वैश्विक शांति जैसे जो यूनिवर्सल वैल्यूज हैं वो पूरी दुनिया में कायम हो सकें, केवल भारत में ही न रहें बल्कि पूरी दुनिया में कायम हो सकें। क्योंकि भारत तो एक ऐसा देश है जिसने कि वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला है। भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य हमने नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने वाला दुनिया में कोई एक देश है, उस देश का नाम है भारत। आज हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम अपने विचार किसी पर थोपें न। हम यह नहीं चाहते कि हम विचार किसी के ऊपर इम्पोज करें, थोपने की कोशिश करें। आप रोमन साम्राज्य के दौर से लेकर आज तक देखें तो आमतौर पर जो डोमिनेंट पावर होती हैं वह राजनीतिक या आर्थिक रूप से सबको अपने ढांचे में ढालने की कोशिश करती हैं, या कम से कम उस दिशा में प्रयास तो करती ही हैं। लेकिन हमारी कल्चर, हमारी संस्कृति इससे अलग है। हम यह नहीं मानते कि हर सभ्यता के विकास का हम यह मानते हैं कि हर सभ्यता के विकास का एक अपना तरीका होता है। हम दूसरों पर अपने विचार कभी थोपते नहीं हैं। हमें इस भाव को सुपर पावर बनने के बाद भी हमको बनाए रखना होगा। हम सुपर पावर होकर भी एक नई रवायत शुरू करेंगे कि हम किसी को इन्फीरियर और सुपीरियर दृष्टिकोण से नहीं देखेंगे। हम चाहे यूरोप के किसी डेवलप्ड कंट्री के साथ हों या फिर अफ्रीका के किसी अंडर डेवलप्ड कंट्री के साथ हों, हम दोनों से ही परस्पर सम्मान और हम बराबरी का भाव रखेंगे। ऐसा होगा हमारा भारत। हमें इस स्वभाव को विकसित राष्ट्र बनने के बाद भी लगातार बनाए रखना है। और साथियों, अब तक हम देखते आए हैं कि आज तक ह्यूमैनिटी का इवोल्यूशन इस तरीके से हुआ है कि कोई अद्भुत क्षमता या विचारों वाला व्यक्ति आता है और मानवता को एक ड्रीम, एक स्वप्न दिखाता है, और जब मानवता उसके सपनों को समझ लेती है और उनके बताए रास्ते पर चलती है तो सभ्यताओं का निर्माण होता है, सिविलाइजेशंस बनती हैं। लेकिन ये दूसरे दौर की बातें थी कि कोई एक व्यक्ति सपने देखता था और पूरी सिविलाइजेशन उस आदमी के सपनों को फॉलो करती थी। तब मानवता ने लोकतांत्रिक मूल्यों को उस तरीके से स्वीकार नहीं किया था जिस तरीके से आज किया है। आज दौर बदल रहा है, आज दौर बदल गया है। वो कहते हैं ना कि वो साल दूसरा था और ये साल दूसरा है। आज का समय लोकतंत्र का है। मैं यह नहीं चाहता कि मैं सपने देखूं और आप उस पर काम करें, या आप सपने देखें और कोई तीसरा आकर उस पर काम करे। यह देश जितना मेरा है उतना आपका भी है। इसलिए मैं चाहता हूं आइए साथ मिलकर एक नए भारत के लिए हम सामूहिक स्वप्न देखें, और जब उन सपनों पर आम राय हो जाए तो मिलकर उनको पूरा करने की तरफ हम मिलजुल कर आगे बढ़ें। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आई हैव ए ड्रीम, बल्कि मैं ये कहूँगा लेट अस हैव ए ड्रीम। आइए साथियों मिलकर स्वप्न देखें एक ऐसे भारत का जहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक के लोगों में राष्ट्र निर्माण की एक समान चेतना व्याप्त हो, जहाँ बिना किसी भेदभाव के सभी भारतवासी भाईचारे की समतल जमीन पर एक साथ बैठ सकें, जहाँ एक छोटी सी दूब यानी घास का तिनका भी उसी गर्व के साथ सीना चौड़ा करके खड़ा हो सके जिस गर्व के साथ खड़ा होता है कोई विशाल बरगद, जहाँ समाज के आखिरी छोर पर खड़ा व्यक्ति भी यह महसूस करे कि यह देश उसका भी है, इस राष्ट्र के निर्माण में उसका भी योगदान है। साथियों, आइए स्वप्न देखें एक ऐसे भारत का
जहां हमारी जनरेशन्स का आकलन उसकी जाति व धर्म से नहीं बल्कि उनके ज्ञान और चरित्र के आधार पर हो, जहां हर भारतीय को सभी मानवाधिकार, सारी ह्यूमन राइट्स उसको सुलभ हों और उसके अंदर भी उनके कर्तव्यों के प्रति निष्ठा हो। साथियों, आइए स्वप्न देखें एक ऐसे भारत का जहां कोई भूखा न रहे, जहां कोई गरीब न रहे, जहां सबको रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ गरिमामयी जीवन जीने का अवसर मिले। ऐसा हम भारत बनाना चाहते हैं जहां शासन तंत्र के सूरज की रोशनी बस पहाड़ों की चोटियों तक ही न पहुंचे बल्कि निचली खाइयों में भी बराबर पहुंचे, यानी व्यवस्था सबके लिए समान हो। हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं। आइए हम सब स्वप्न देखें एक ऐसे भारत का जो इतना शक्तिशाली हो, वह स्वयं की रक्षा तो करे ही, साथ ही वो अपने अहंकार पर भी विजय प्राप्त करे। मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, हम स्वप्न देखें ऐसे भारत का जो इतना शक्तिशाली हो कि वह स्वयं की रक्षा तो करे ही, साथ ही अपने अहंकार पर भी विजय पाते हुए दुनिया में कहीं भी हो रहे किसी अन्याय के खिलाफ पूरी ताकत के साथ खड़ा हो सके। हम ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। आइए हम स्वप्न देखें एक ऐसे भारत का जहां धर्म में राजनीति नहीं लेकिन राजनीति में धर्म हो। फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, आइए स्वप्न देखें हम ऐसे भारत का जहां धर्म में राजनीति नहीं बल्कि राजनीति में धर्म हो और जनता की सेवा को हर राजनेता अपना धर्म समझे। हर भारतवासी को अपने देश पर, अपनी संस्कृति पर गर्व हो। हमें अमृतकाल की समाप्ति तक एक ऐसे ही भारत का निर्माण करना होगा साथियों, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां फल फूल सकें। और मेरा विश्वास है कि हमारा आने वाला भारत कुछ ऐसा ही होगा और इसी विश्वास के साथ हम लोग अपने कदम भी आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ ही आगे कुछ न कहते हुए मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा और इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करते हुए एक बार फिर आयोजकों को अपनी तरफ से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे शिरकत करने की इजाज़त दी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। Rajnath ji यहाँ आने के लिए and for sharing your dream of what you see the next few years for India. Thank you very much from the entire group. Thank you. Thank you, MK, as well. Ladies and gentlemen, let's move on now. As an idea, the corporate governance model seems pretty pro-positive to create a well-built government machinery, in fact, both the state as well as the central levels. And as the Indian Republic completes 75 years of its existence, we've seen the evolution of the relationship between the center and the states evolve with the changing times as well. Now, today our states provide sound support to facilitate the growth of the nation by walking in step with the national policy. In fact, Chhattisgarh as a state has not only contributed to the national GDP, but has been steadily growing over the past 2 years at a steady rate of approximately 8%, a percentage higher than the national GDP. Our next speaker helms this prosperous state and could not be here today, but he sat down with us to speak to us on how states will add up to India's growth ambition. Please put your hands together for a special feature with the Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Shri Bhupesh Baghel, in conversation with Managing Editor Mera Now, Nikunj Garg. मुख्यमंत्री जी, चूंकि इकोनॉमिक कॉन्क्लेव है तो मैं आपसे इकोनॉमिक मसलों पे ही बात करूंगा। आपने हाल ही में एक बजट पेश किया है और बजट में आपने कहा, क्योंकि सरकार की आपकी बड़ी निंदा होती रही है इस मसले को लेकर कि बड़े लोन लेते हैं सरकारें, राज्य सरकारों पे ये आक्षेप खासकर तब से लगने लगा है जब से आपने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करनी शुरू करी है कांग्रेस पार्टी ने और आपकी सरकार ने। ऐसा कैसे हो सकता है मुख्यमंत्री जी कि आप बिना लोन लिए सारे अपने वायदे पूरे कर दें? देखिए, ये सबसे पहली बात यह है कि वित्तीय अनुशासन बना कर रखना, और दूसरा आय के स्रोत, जो आय है उसमें बराबर मॉनिटरिंग करते रहो और देखते रहिए कि ठीक से राज को उसमें पैसा पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो हमने उसमें लगातार मॉनिटरिंग की और इसके कारण से हमारा रेवेन्यू भी बढ़ा। तो एक तरफ हमने रेवेन्यू बढ़ाने का काम किया, दूसरी तरफ वित्तीय अनुशासन बनाने का काम किया, और इस कारण से फिर छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारी जो योजना है उसको हम लोग लागू करने में सफल रहे। मुख्यमंत्री जी, आपके सरकार का ये भी दावा रहा है कि आप
पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा एमएसपी देते हैं किसान को, न्यूनतम समर्थक मूल्य है वो सबसे ज़्यादा आप देते हैं। तो ये वाकई में सही है कि राजनीतिक तौर पे है? क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि भाई सपोर्ट प्राइस में तो हम भी कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो हमारे कंट्रीब्यूशन से ही वो सपोर्ट प्राइस बढ़ता है। केंद्र सरकार क्या सपोर्ट प्राइस में देती है भाई? हमारे पास मार्केटिंग फेडरेशन है, मार्केटिंग फेडरेशन को लोन लेने की गारंटी राज्य सरकार देती है। इस साल मार्केटिंग फेडरेशन के द्वारा 22,000 करोड़ रुपए का धान खरीदा गया, तो पैसा केंद्र सरकार की गारंटी दी क्या? राज्य सरकार ने दी। और बैंकों से हम लोन लेते हैं, उसका ब्याज देती है मार्केटिंग फेडरेशन, आखिर राज्य सरकार ही देती है। तो केंद्र सरकार कहाँ से आ गया? केंद्र सरकार चावल लेती है, जब हम उसको प्रोक्योर कर लेते हैं, फिर ट्रांसपोर्टिंग करते हैं, मिलिंग करते हैं, और उसके बाद उसके एफसीआई जाकर जमा करते हैं। और उस समय ये हमको, अब उनको ज़रूरत पड़ी तो 62 लाख कर दिए। एक समय था हमारे 26 लाख, जो 36 लाख मीट्रिक टन खरीदे थे उसको 26 लाख कर दिए। आपने चिट्ठी भी लिखी तब भारत सरकार को, चावल हमारा जमा नहीं किया, तो आखिर चावल धान को हमने नीलाम किया और सैकड़ों करोड़ का घाटा हम सहे। तो घाटा तो हम सहे उसमें ना। भारत सरकार ने कहाँ किया? उन्होंने कहा कि आप इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, तो 2,500 में खरीदने का फैसला किया था। तो हमने कहा भाई प्रति एकड़ 10,000 रुपये एकड़ दे देते हैं। तो उन्होंने कहा कि केवल धान भर में क्यों? तो हम मिलेट्स में भी देना शुरू किए, मक्का भी शुरू किए, गन्ना भी शुरू किए, सबसे ज़्यादा हम लोग देते हैं। तो फिर इनपुट सब्सिडी हमने देना शुरू किया, तब जाके वो 62 लाख मीट्रिक टन हुआ। तो वो कभी खरीदेंगे बोलेंगे, कभी नहीं खरीदेंगे चावल बोलेंगे, लेकिन धान तो हम खरीद ही रहे हैं ना। इस साल तो 20 क्विंटल हमने किया। वो धान खरीदने में क्या सपोर्ट कर रहे हैं? उसको चावल चाहिए हमसे तो चावल लेते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भाई हमको इथेनॉल बनाने की अनुमति दे दीजिए आप, हम इथेनॉल प्लांट लगाएंगे, तो धान से इथेनॉल बना लेंगे और इथेनॉल का रेट आप तय कर दीजिए, इंडियन ऑयल खरीद ले, हम वहाँ देंगे। वैसे भी अभी तक के पेट्रोलियम में 20% ही 20% तक के आप मिला सकते हैं जी। अभी केवल 6% मिला रहे हैं जी। तो 14% का कुशन है आपके पास। लेकिन भारत सरकार जिद में अड़ी हुई है। मेरे फाइल चल रहा है, प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय में अटका हुआ है। आपने चिट्ठी एक लिखी थी भारत सरकार को कई बार। तो एक मुख्यमंत्री जी आपकी ये डिमांड है कि एथेनॉल को बढ़ाया जाए। एक लगातार डिमांड आपकी ये भी रहती है, अगर हम वित्तीय मामलों की बात करें तो जीएसटी कॉम्पनसेशन को लेकर जी, जीएसटी कॉम्पनसेशन को लेकर के केंद्र का दावा अब ये है कि हमने जो राज्यों को दिए जाने वाला मुआवजा था वो हमारी तरफ से पूरी तरह से स्मूथ हो चुका है, सब समय से मिल रहा है, ऐसा अब आप मानते हैं? देखिए, एक चीज़ है कि ये जो जीएसटी का जो नियम है वो उत्पादक राज्यों के विपरीत है, और ऐसे में औद्योगिकरण की विपरीत इसका प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि राज्य सरकार क्यों, मतलब जो उत्पादक राज्य है, जैसे छत्तीसगढ़ उत्पादक राज्य है और हमको उसका लाभ नहीं मिलता, जो कंज्यूमर स्टेट है उसको ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि जीएसटी उसको ज़्यादा जाएगा। और इसी कारण तो भारत सरकार ने 5 साल तक के कॉम्पनसेशन की बात की। तो अब हमको हर साल 5-6 हज़ार करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो औद्योगिकरण के विपरीत जाएगा ना। क्यों राज्य फिर अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश में उद्योग लगाएगा? क्योंकि उद्योग लगाने के बाद तो पॉल्यूशन का है, जमीन का है और दूसरे प्रकार की बातें आती है, तो उसे तो नुकसान ही होता है। तो औद्योगिकरण चाहिए तो आपको जिन राज्य उत्पादक राज्य हैं उसको कंपनसेशन देना चाहिए। पर ये फिर बात आप जीएसटी काउंसिल में उठाते हैं क्या मुख्यमंत्री? कितने बार लिखित में दे रहे हैं, इससे हमको नुकसान हो रहा है उत्पादक राज्यों को। प्रधानमंत्री से मिले हैं, वित्त मंत्री से मिले हैं, तब भी बात उठाएं। क्या रवैया रहता है सरकार का, केंद्र सरकार? शांत है, चुप है, मत इसका मतलब नहीं करना चाहते। पंडित नेहरू के ज़माने से कांग्रेस पार्टी की एक पोजीशन थी ओबीसी कास्ट सेंसस वगैरह को लेकर के। उस पोजीशन को अपने आप लोगों ने अचानक से ऑल ऑफ अ सडन चेंज किया और कहा कि ओबीसी कास्ट सेंसस होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ये अधिकार मिलना चाहिए। तो सामने से आरोप ये लगता है कि ये सब राजनीति के तहत है, आप अपनी राजनीति की सत्ता का रास्ता ढूंढ रहे हैं ओबीसी के मार्फत। देखिए, ये चीज़ समझ लीजिए कि देश में अलग अलग समय जो परिस्थितियाँ रहती है उसके हिसाब से तत्कालीन सरकारें फैसला करती हैं। पहले उदारीकरण नहीं था, नेहरू जी से लेके इंदिरा जी तक के उदारीकरण नहीं था। उसके बाद नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी से उदारीकरण हुआ, परिवर्तन आया ना। आप दोनों को बोले, दोनों बिल्कुल विरोधाभास हैं। उस समय जो स्थिति थी उस हिसाब से निर्णय लेते। आज कास्ट सेंसस की बात इसलिए किया जा रहा है कि 70-75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए,
लेकिन अभी भी चाहे एसटी है, एससी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस में, अपर क्लास में बहुत सारी जातियां हैं जो पिछड़ गई हैं। तो जब तक कि आपको जानकारी नहीं होगा, आपके पास डाटा नहीं होगा, आप उसके लिए योजना कैसे बनाएंगे? यदि योजना बनाते फिर काल्पनिक होगा कि इस जाति के ये वर्ग हमारे से छूट गया है, ये एरिया छूट गया है, तो उस हिसाब से आपकी योजना बनेगी। तो ये तो योजना बनाने आपको सहूलियत होगी ना, तो इसलिए कास्ट सेंसर का आज मांग किया जा रही है। मुख्यमंत्री जी, आपका बड़ा राज्य इन द सेंस हार्ट ऑफ इंडिया में है, बड़ा राज्य, आबादी जरूर कम हो लेकिन क्षेत्रफल काफी है, बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। तो देश के कई राज्यों से बड़ा क्षेत्रफल है। ऐसे में आपने भी डेटा की बात की और आपने कहा कि अगर आपके पास में डेटा अवेलेबल नहीं हो तो क्या योजनाएं आप बना रहे होंगे। सेंसस जो होना था देश का, जो हर 10 साल पे होता था, वो सेंसस नहीं हो रहा है। सेंसस हमेशा भारत सरकार पुशबैक, पहले कोविड के वजह से दावा किया गया कि कोविड की वजह से नहीं करवा सकते थे, अब कोविड खत्म हुए, तमाम प्रोटोकॉल हटे हुए भी समय हो गया, अभी भी सेंसस नहीं हो रहा। तो आपको लगता है कि गवर्नेंस में कम से कम जो आपकी गवर्नेंस है, आप राज्य को, सूबे को गवर्न करते हैं, उस गवर्नेंस में नए चैलेंजेस आएंगे इसकी वजह से, अगर सेंसस समय से नहीं हो पाएगा तो? बिल्कुल होगा, 10 साल में होना चाहिए था, अब 2021 में हो जाना चाहिए, 2023 हो गया, और उसके बाद भी आप सेंसस नहीं करा रहे हैं। आखिर बनाया क्यों जाता है, सेंसस किया क्यों जाता है? जनगणना भी और आर्थिक सर्वेक्षण दोनों होते हैं, उन्होंने नहीं कराया। हमने आर्थिक सर्वेक्षण अभी करा दिया अपने राज्य में, जनगणना तो हम नहीं करा सकते क्योंकि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण जरूर करा दिया। उसमें कुछ बिंदु में हम आर्थिक सर्वेक्षण किए और उसके आधार पर आगे हम योजना बनाएंगे। देखिए, जैसे हम ट्राइबल की बात करें, छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजाति हैं, 32% उसकी जनसंख्या है। कितने जो जनजाति हैं वो आगे बढ़ गए, बहुत सारी जनजाति हैं जो पिछड़े हुए हैं, और हमारे प्रिमिटिव टाइप्स, प्रिमिटिव टाइप के अभी करीब 9600 पद हम लोग निकाले सीधी भर्ती के लिए, क्योंकि प्रिमिटिव टाइप्स। तो ऐसे अब उसमें भी अब अध्ययन करना पड़ेगा कि कौन से प्रिमिटिव टाइप से अब आगे बढ़ गए। तो जब तक कि आप आर्थिक सर्वेक्षण नहीं करेंगे तब तक की बात कहाँ बनेगी? इसीलिए जनगणना होना चाहिए, इसीलिए आर्थिक सर्वेक्षण होना चाहिए। कर्नाटक में आपकी पार्टी को बड़ा मैंडेट मिला है, मैंडेट नहीं, बड़ा मैंडेट मिला है। आपको लगता है आपने कई सारे चुनाव अब पार्टी के ऑब्जर्वर, स्पेशल ऑब्जर्वर, सीनियर लीडर के तौर पे करके देख लिए हैं, आपको क्या लगता है कि कर्नाटक में क्या चला, हिमाचल में क्या चला जो बाकी जगह पे नहीं चल पा रहा था, या अब हवा में कोई ऐसा परिवर्तन है जिससे लग रहा है कि माहौल बदलने लगा है? देखिए, जो जुमलेबाजी है उससे जनता उब चुकी है। जो लगातार आप आश्वासन देते हैं और उसको पूरा नहीं करते, उससे काफ़ी लोग नाराज हुए। आप रोजगार देने की बात आपने की थी, वो किए नहीं। 15 लाख तो खैर जुमला ही है। महंगाई कम करने की बात है, आप उज्ज्वला बांट दिए, अब वो महिलाओं के पहुंच के बाहर हो गया। 400 मिलता था, अब 1200, 1150, 1200 हो गया। आप खाने के तेल देखो और जितनी भी चीज़ें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। आय के साधन सिमटते जा रहा है। किसानों के आय दुगुनी करने की बात कही थी। सबसे ज़्यादा देश बड़ी आबादी तो किसानों की है। आय दुगुनी तो नहीं हुई, आधी हो गई, लेकिन कृषि की लागत है वो दुगुनी जरूर हो गई। तो इससे ऊब गए हैं। हिमाचल में भी ये बात आई, कर्मचारी वर्ग भी खासा नाराज है। तो अलग अलग क्षेत्रों में कुछ क्षेत्रीय मामला भी रहता है, लेकिन मुख्य रूप से जो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। कितने दिन तक के आप धार्मिक भावनाओं के खिलवाड़ करके आप वोट लेते रहेंगे? आखिर जनता समझती है, आखिर उनके भी पेट का सवाल है। मुख्यमंत्री जी, मेरा आखिरी सवाल, मध्य प्रदेश में आप लोग एक बड़ा कैंपेन चला रहे हैं। आपने अपनी राजनीति की शुरुआत भी अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश से की थी, और उस कैंपेन में भी हिंदुत्व काफ़ी कलर में है। कमलनाथ जी हिंदुत्व को लेके काफ़ी कलर में है। आप खुद एक रामगमन पथ के लेकर के अभी, इसीलिए आप हमारे पास नहीं आ पाएंगे जो आप कर रहे हैं फंक्शन। तो लोग कहेंगे कि कांग्रेस की तरफ से भी ये सॉफ्ट हिंदुत्व की एक अप्रोच है। सॉफ्ट हिंदुत्व ऐसे कि कम से कम हिंदुत्व के नाम पे कांग्रेस को कोई ये ना कह सके कि ये हिंदुओं के खिलाफ पार्टी है, जो कि एक ताना या तमगा आपके ऊपर लगता रहता है। देखिए, ये आपके सोचने का तरीका हो सकता है और स्वतंत्र हैं आप, लेकिन हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सहेजने संवारने में लगे हैं। अब बताइए, देश या दुनिया में कहीं भी आदिवासी नृत्य महोत्सव होता है? हमने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव किए 3 साल तक के, और उसमें अंतर्राष्ट्रीय विदेशों की 26 टीमें आई थी, 26 देशों की टीम आई थी। हमारा इतना लोकप्रिय हुआ। तो ये क्या हिंदुत्व की बात है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी रहते हैं। उसके सबके रहन सहन, खान पान, बोली, परंपराएं अलग अलग है, उसकी संस्कृतियाँ हैं।
तो हम उसे देश और दुनिया के मानचित्र में क्यों ना लाएं? यदि राम है वो हमारे, चूंकि छत्तीसगढ़ के भांजा के रूप में जानते हैं, भांजा राम के रूप में जानते हैं, और हमारे जनजीवन में रचा बसा है, तो हमारी संस्कृति में है। तो यदि उस संस्कृति की बात को उठाएं, यदि हम उस नाम से वोट मांगे तब गलत है। आप तो राम के नाम से वोट मांगते हैं, राम के लिए करते क्या है आप? मंदिर खोलेंगे अभी जनवरी में? बस एक ठो, हम तो 3-3 भगवान राम की मूर्ति लगा दी वहाँ। इतना छोटा छत्तीसगढ़, और कोई हल्ला गुल्ला नहीं किए। चंदखुरी में किए, सबरी नारायण में किए, राजिन में किए। फिर जितने भी बौद्ध परिसर है हमारे यहाँ, 10 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। नागार्जुन जी वहाँ रहे, तो उस परिसर को डेवलप कर रहे हैं हम लोग, ताकि देश के विदेश के यात्री आए वहाँ। तो हमारी जितनी भी परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसको सहेजने संवारने का काम हम लोग कर रहे हैं। बातें कर रहे हैं गौ माता की, गाय के नाम से वोट मांगते हैं, लेकिन हम 10,000 का उठान बना दिए। गोबर खरीदने का काम कर रहे हैं, गोबर से अर्थव्यवस्था, लोगों का अर्थव्यवस्था सुधर रही है, गाय की सेवा भी कर रहे हैं। तो ये हमारे किसानों की परंपराएं रही है कि पशुपालन भी करना है। अब पशुपालन आज अनार्थिक हो गया है, उसको आर्थिक कर रहे हैं। तो एक तरफ हम ये जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, उसको सहेजने का काम कर रहे हैं। तो इसमें कहाँ आ गया भाई कि उसके कार्ड हम दे रहे हैं, हिंदुत्व के कार्ड कर रहे हैं? ये तो हमारी संस्कृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति। नहीं तो अभी तक छत्तीसगढ़ को नक्सली के नाम से जानते थे, नक्सलगढ़ के नाम से। आज तो जानने लगे कि छत्तीसगढ़ में क्या है। अब दूसरे रूप में आप बात कर रहे हैं। नहीं तो अभी सबसे पहले सवाल आपका नक्सल के मामले में होता, लेकिन पहला सवाल वो हुआ नहीं, अभी तक भी नहीं पूछे हैं। उसका कारण क्या है कि छत्तीसगढ़ की बहुत सारी चीज़ों को हमने देश और दुनिया के मानचित्र में सामने ला रखा है। मुख्यमंत्री जी, आप हमारे साथ जुड़े, इतने व्यस्त शेड्यूल से एक समय निकाला, थैंक यू, धन्यवाद आपका। जी नमस्कार। नमस्कार। Well, ladies and gentlemen, as we learned, for India to reach its destined potential and position on the world stage, we must promote the state ambitions as well. Well, in fact, the whole idea of cooperative federalism has been stressed on again and again, whether it be deciding the GST in the GST Council or having better coordination between the states and the center in the Niti Aayog. It's a well-known fact that entrepreneurs play an integral part in the growth of India's economy. Any country, in fact, that makes it easy for businesses to run is on the path to progress. Our next speaker will be sharing his insights on how India can provide a more beneficial platform to its entrepreneurs. In fact, Padmaja, he's a very accomplished business leader with an existence or rather experience expanding companies globally and spearheading successful business transformation as well. In fact, the company that he's heading is a premier health and wellness company and also a community that actually serves citizens in more than almost about 90 markets. To talk to us about the important impact of nutrition and the economy and unleashing economic potential, exploring the power of direct selling, please welcome the chairman and CEO of Herbalife, Michael O. Johnson, in conversation with Editor-in-Chief for Times Now Editorial Director Rahul Shivshankar. Very good morning from India. Michael O. Johnson, thank you very much for being here. And I know that quite a few of us are looking forward to this session because we'd get your insights on how you're perceiving our country and exploring the power of direct selling here, and of course to interface with Indian consumers and their habits. I can't help but say that there is someone standing behind you, and he's one of my favorite footballers. I wish he were live, but that's, as we all know, viewers, the great Ronaldo. Well, Mr. Johnson, let me begin by asking you a very straightforward
simple question. What role can public and private sectors play in improving people's overall health? There's been a huge emphasis in India on this sector, and you know that the Modi government has performed quite well on the back of the COVID pandemic. Of course, we got off, like everyone else did, to a spluttering start, but then after that, with the vaccine program, we got around to immunizing crores of Indians, almost 200 crore Indians, and that is a record in itself. So health very much in the ether. How does that impact economic growth, the well-being of a public? Rahul, let me start first by saying good evening from Los Angeles, and thank you very much for having me at the Times Network India Economic Conference. It's an honor and a pleasure for Herbalife and for me to be with you tonight and today and this morning in India. Good afternoon, I guess I should say. I'm going to start off with a story, and I'm basically, part of my life has been with a storytelling company, Disney, and now with Herbalife, and our distributors are out telling the story of economic health and economic wealth and opportunity that they can build in people's lives. When I was trying to entice a gentleman who was the 17th Surgeon General of the United States to join Herbalife, he came to California, and I picked him up, and we went for a drive. We saw our science center. We saw our product development center. We met with scientists, doctors, PhDs in different areas. He's very impressed. But he turned to me and said, Michael, look, I am on a lot of boards. I'm very busy. And this is Dr. Richard Carmona. He said, I just don't have time, frankly, for another board. And I said, okay, that's fair. But why don't you spend a day in the field with me? Why don't you come out and see how our distributors impact people's lives on a very local basis? So what we did was we went to what is called a nutrition club, and they're all over India, and they have been a substantial part of our economic model and the economic prowess that's put into the marketplace by distributors. And we went in, and it was very humble. It's not elegant. It was not, it's not fancy by any means, but they were serving shake, tea, and aloe in that club. And they were having a community built around that. People were going out for walks in the afternoon. They were talking. They were working on weight loss, weight management, and nutrition in their lives. And Dr. Carmona, I said, well, we've got about a half an hour in here, but he dragged on for at least an hour. And he was engaging, talking to people, spending time with them. And he was taken by it. And we got out in the car, and Dr. Carmona is a former military man, Surgeon General of the United States. And he grabbed me, and I thought, uh-oh, what's going to happen now? And he said, do you know what you have here? And I looked at him, and I was trying to anticipate how to answer the question. And I said, you tell me. And he said, you have a distributed healthcare platform done by individuals who are entrepreneurs, and I want to be part of this. And he's been on our board for, 13, 14 years since then. He's a huge member of our board. And it points to all the things that Herbalife is and the economic opportunity seen by individuals to impact people's health by building a community around what we do and around what they do. And the world that we're living in right now is in such horrendous need for good health, horrendous need for focus, and we've gotten it through the pandemic. So many marketplaces have said, holy heck, we have got to deal with, I used a nice word there, and we got to deal with a health issue here that's gigantic. And the pandemic, unfortunately, impacted a certain sector of all of our societies worse than it impacted another, and those who were not as healthy as they should have been, those who were not looking after their nutrition the way they should have been. Now, it hit everybody. Let's not kid ourselves. But the opportunity for an individual to have an impact in their society, especially in India, for our marketplace there, which is phenomenal, we've got it. So I hope that's not a long-winded answer to your question, but it gives you an example of the impact our company can have in people's lives on a daily basis, and the impact it can have in a distributor's life. And I've followed and I've read about Prime Minister Modi's plan around, self-reliance, and this is what we're all about. This is our wheelhouse, right where we are.
Not long, but comprehensive, and comprehensive is always welcome. Impressive growth, of course, in the sector. Mr. Johnson, especially over the past couple of years, and I think it's because we've all become aware of how precious life is after the pandemic. What are the other reasons really for the pickup? I mean, yes, the pandemic was obviously a catalyst, but is it self-awareness? Is it a greater appreciation for the bounties of life and the need to be healthy, to appreciate them? Where does this come from? Well, you hit on it. People want to be around longer. I'm a new grandfather. You know, that I look in the mirror and go, what happened all the years? But I'm a new grandfather. I have a wonderful woman in my life. I have all the reasons to live a long life. I have all of them in front of me. And I think more people are coming to that realization inside their lives because they started to put a priority during this pandemic on their health, on their well-being, on their mental well-being. And I want to talk about in a minute, we have another epidemic, it's called loneliness out there, which interestingly enough, I think we're addressing too. But this opportunity right now, and the reason people have come to this is that they see their lives right now in a different scope than they saw it before this pandemic. Things got narrowed down very quickly. We got put in a capsule of our own life, if you will. We got to see our lives in a different light, and the importance and the quality of our individual health, our individual well-being, how we can take control of our own income streams, our own wealth streams, be less reliant on others for that, and more reliant on ourselves. This is what, to me, kind of came out of the pandemic. A few other things definitely came out of it, some real negatives. There's a loneliness factor. I keep reading more and more about this. It's a global impact. I'm sure it's in India. I'm not, as familiar with it, but where people got put on in their own capsules, if you will, in their own lives, and they became lonely. And as they came out of this, they had to understand the need for community, which our nutrition clubs and our distributors create that every single day. They have a place where people come together, where they can enjoy each other. They can have a spirit together for healthy, active lifestyle, for better nutrition, for weight management, for doing things that build an economic freedom in their lives, but also build that nutritional base in their lives. And my brother, when I first joined Herbalife, he gave me a little quote that said, right, the first wealth is health. And that is so true. And that's what we bring to the table. It is so important for people now to focus on that. And then this loneliness factor that's in there with all these nutrition clubs that we've got going globally in India and around the world, and building those communities together. That is this really, important aspect of this business that we may not have understood as fully as we are really beginning to get our arms around now. And we can do it uniquely. Digital is important. There's no doubt about it. Having the ability to transact, but it's still, it's high tech is important, but high touch in our companies more vital than ever. That's very well put. That's very, very well put. We've got a house full here this morning of many entrepreneurs who are amongst us, and they'll probably want to hear from you, if some of them are interested in the well-being sector, how you see the Indian economy growing, especially in this sector. Well, I can tell you from our business, the growth is phenomenal because we've seen people grab a hold of healthy, active lifestyle, of understanding their nutrition better, of wanting to build a business around that. And our business is inexpensive to get in. It is providing a platform for people to improve their lives, to earn what they're worth. This is what our founder said in 1980, a 24-year-old young man who was literally selling products out of his car and addressing an issue. And so this company was founded by an entrepreneur. I see myself as an entrepreneur, if you will, somebody who works inside a company focusing on that. But we're made up of thousands, tens of thousands of small businesses. And that's where the economic opportunity comes in for an entrepreneur who wants to build something in their community and service people's needs in their lives for nutrition, service their needs for a well-balanced diet, service their needs for education about nutrition, and bringing them in to help build their lives. Now, if someone walks into those clubs or works with our distributors and says, this is something I think I can do,
And then what happens in our entrepreneurial environment is training is vital. It is vital for what we call an upline. If I recruit you to join this company, we want to make sure you have a plan to succeed. We want to make sure you know how to go to market. We want to make sure you understand what we call DMOs, distributor methods of operations, whether you're going to do it on a social network platform, whether you're going to do it person to person in someone's home, whether you're going to build it through a nutrition club, whatever opportunity that fits your personality, as long as you have, a little gut, some grit, some drive, you have a fraternal skill, and then we'll help you with the technical skills to help you succeed. But like any business, and if there's entrepreneurs sitting out there, they didn't get there. They didn't get to success by dreaming it. They got to success by doing it. It takes work. Yeah. It takes effort. All of us in our lives, you, me, all of us, didn't get to the place we're in by just waking up and dreaming it. We went every day with a plan. We got disciplined about it. We built that opportunity, and we had to have an environment like India where that is accepted, and not only accepted, it's sponsored by the government. The government's saying to people, hey, let's get self-reliant here. John Kennedy in the United States had a quote in his 1960 inaugural speech that ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. That is, to me, a statement that's lived with me forever. I was a very young man when John Kennedy was inaugurated, but that's lived with me forever. It's maybe not as popular in some marketplaces now because we're looking for government to solve our issues. And in this day and age in India, I love it. It's the self-reliance, the ability for an entrepreneur to get out there and build a business, the opportunity for people to impact people's lives and better their lives through health, and then build a platform for them that maybe they can pick up their wealth and improve their family, lift their dignity. I sound like a preacher, I know, but I'm very high on what we're doing. Well, you're certainly at least living the talk, because my final couple of questions, I know it's getting late in your part of the world and I don't want to hold you up, but you were talking about the fact that in India we've got this conversation going about being self-reliant. Actually, the government sort of calls it empowerment, and the concept of handouts, the Prime Minister has been talking against it, and he's saying that, look, I'm going to give you stuff that is going to enable you. And I'm just going to weave that into a couple of questions. How does Herbalife see itself contributing to India's economic well-being in the context of what the Indian Prime Minister and the government have been saying? And secondly, I'm really curious to know a little bit about why an American has a football star at the back of him. You guys play another kind of football, different ball game. So 2 questions. Okay. So we are, not I, it's we. We are completely aligned with the idea of self-reliance. Right. In Herbalife, you make money by selling product. That's the only way you do it. You have to perform in your business, and you make money doing it that way. You build a better opportunity for your family that way, for yourself, better education environments, better gifts for the holidays, better clothes for the kids. We lift the economics, we lift the people from economic levels up. That it's so hard to explain unless you see it. Yeah. And we have thousands, tens of thousands of distributors who have stories that are amazing. They're cab drivers, they're sanitation workers, they're doctors, they're lawyers who have come to Herbalife and lifted their station because they put together a business opportunity that is based on self-reliance. It's based on performance in their marketplace, how they took our product, how they took our business opportunity into their community and improved lives and built opportunities for themselves and for their community around it. So that community aspect is vital to us. Right. That self-reliance is something that is part of our fabric, and it's been in the quilt of Herbalife since day one. We have a meritocracy in this company. You get paid, you get to earn what you're worth. There's no handouts here. There's no easy road. There is, and I'm not saying it's that difficult. We try to keep it simple. We try to keep it understandable. The world's gotten more complex. There's without a doubt. But if somebody wants to come here and build their life, they can do it. All of the tools are here for them to do it. They have to add a little perspiration, a little inspiration, a little aspiration, and they can go forward with it.
Now, my friend back here that you want to talk about, I've got actually a couple friends back here. I've got David Beckham back here too. Oh, so wonderful. We'll show him to you too. Look, sports have a world. We have Virat Kohli, and you know, Virat is, as you well know, is a Indian superstar. And so we follow cricket very closely, and we follow the International Cricket League there, and we're a big participant and a player in it. What we've done is that there's a couple things that really get people on the same page: music and sports. Right. You know, you have a favorite song, I've got a favorite song, you got a favorite team, I've got a favorite team. Cristiano Ronaldo is a spokesperson for us on a global basis because he's a product user. We have a product named after him, CR7. Oh, wow. And that product he helped develop with John Heiss, one of our top scientists in our company, who went and spent time with him. We tried to understand his workouts. We tried to understand who he is as an individual. And we've been with Cristiano a long time. He's been with us. We've been with him. Yeah, we pay him without a doubt, but he's authentic. We don't want somebody who's out selling products that are, frankly, don't speak to who we are. I don't want to take any other companies on, or, you know, sugar water or anything like that. We'll leave that for others to decide. But he is authentic. And so we follow him very closely. He follows us. You know, Cristiano is part of the fabric of Herbalife. We've used other soccer superstars in this company. We've had some of the biggest names in the world. Football, as we should say, outside the U.S. I don't know, you know, how we ended up calling it soccer here, because we have as you said, a football here in the United States. Right. But you know, we are localizing our efforts. So in India, it's cricket is the name of the game. We've got badminton players. We got Mary Kwam, an Indian boxer, who's also part of your legislative world, and then has come back to the boxing world. Don't get in a ring with her. She's an Indian icon, no doubt. And you know, so we're using local people. We have a sports line in our company we're pretty proud of. We have a weight management line, a sports line, a daily nutrition line. And what we're trying to do is bring people around that who are authentic and believe in us. Wonderful. Lovely speaking to you this evening or this morning, wherever you are. Michael O'Johnson. It's this evening. Well, thank this you is very the much. latest I've ever had a tie on, probably, in my life. Well, let me tell you, people, I think, have appreciated the time you've taken out. Thank you very much, Michael O'Johnson. Lovely speaking to you. And I believe you're a runner, so keep on running. Thanks. I'm a biker. I love to bike. So well, there you go. I'm going to be in India in a couple of weeks. I don't think I'll be on a bike there. It's a little warm from what I hear. So. Be nice to see you. Well, thank you, my friend. Thank you very much for having us. Lovely talking to you. Bye-bye. Good night. Good luck, everyone. Thank you. Thank you for that very engaging conversation, Mr. Johnson, and thank you, Rahul, as well. Now, for our next session, our speaker will be talking about a topic that has been making headlines world over for a while. Ever since OpenAI launched ChatGPT last year, AI has permeated into everyday conversations that Indians are having in their houses, parks, and even at the roadside chaiwala. Just a footnote, this intro was not written with the help of ChatGPT. It was, and I can vouch for that. But to talk about what the potential is of ChatGPT and AI and where is it that we're heading, we have with us in the house today managing information in AI and digital age. Please put your hands together and welcome on stage Minister of Sports, Youth Affairs and Information and Broadcasting to the Government of India, Shri Anurag Thakur on stage. And he's going to be in a conversation with Group Editor, Times Network, and Editor-in-Chief of Times Now, Navbharat, Navika Kumar. A huge round of applause, please. The Minister is just walking in. Navika, can we please request you to begin by felicitating the Minister? Good morning, ladies and gentlemen, and joining me on the stage today is Union Sports, Information and Broadcasting Minister, Mr. Anurag Thakur. Mr. Anurag Thakur, 9 years of Modi government, high points, low points,
At the moment, the discussion only seems to be around the fantastic growth numbers that have come in. How do you see these past 9 years? And what do you think are the top 3 achievements of the Modi Sarkar? Navika ji, let me first take everyone 10 years back. I mean, like 10 साल पहले की बात करूं तो देश के हालात ऐसे थे कि महंगाई चरम सीमा पर थी, 13%, अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, घोटाले एक के बाद दूसरे बाहर आ रहे थे और दुनिया भर में भारत की छवि कोई बहुत अच्छी नहीं थी। गरीबों से किए गए वायदों पर कांग्रेस खरी नहीं उतर पाई थी। एक तरह से लोगों का विश्वास सरकार में, या मैं कहूँ नेता नहीं दिखता था, ना नीतियाँ थी और नीयत में भी खोट ही नजर आता था। और उस समय लगता था कि देश कहाँ जा रहा है। युवा को भी अपनी भविष्य अंधकार में एक तरह से नजर आता था। उस समय देश में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के रूप में मोदी जी का नाम दिया। एक आशा दिखी, एक उम्मीद दिखी, एक होप दिखी, क्योंकि मोदी जी का करियर जो राज्य में देखने को मिला था बहुत सफलतापूर्वक था, विकास और उपलब्धियों भरा था, ईमानदार छवि थी। और आज मैं कह सकता हूं कि जो कभी सोचा ना था कि 4 करोड़ गरीबों के पास पक्का मकान होगा, वो भी हुआ। जो कभी सोचा ना था 9 करोड़ 60 लाख बहनों के पास रसोई गैस का सिलेंडर होगा, वो भी मिला, उसको अपना खाना बनाने का अवसर मिला। जो कभी सोचा ना था हर घर को नल से जल 12 करोड़ घरों को, वो भी मिला। जो कभी सोचा ना था 12 करोड़ शौचालय मिलेंगे। टॉयलेट कहने के लिए छोटी बात लगती है, लेकिन महिलाओं से पूछिए क्या परेशानी है। इज्जत घर नाम उन्होंने इसके लिए दिया। जो कभी सोचा ना था कि कोविड के समय कौन बचाएगा, वो 220 करोड़ वैक्सीन भी मुफ्त में लगाने का काम किया। जो कभी सोचा ना था डबल राशन मुफ्त में मिलना, तो 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक देने का काम किया। कभी सोचा ना था धारा 370 समाप्त होगी, वो भी किया। जो कभी सोचा ना था कि भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आएगी, वो भी हुआ। और जो कभी सोचा ना था कि भव्य और दिव्य राम मंदिर बनेगा, वो भी बनाने का काम किया। अब देखिए, जो कभी सोचा ना वो हुआ। तो मेरी नजर से अगर आप देखोगे तो 9 वर्षों की पहचान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। क्योंकि मोदी जी ने पहले दिन कहा था मेरी सरकार गरीब की, वंचित की, शोषित की, पीड़ित की, महिला, मजदूर, जवान, किसान की होगी। और आज हर कोई कहता है ये मेरी सरकार है, ये मोदी सरकार है। ये विश्वास लोगों का है और 9 वर्षों में उन लोगों को मिला है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि सब हो गया, नहीं। अभी तो हमने नींव रखी है। वी हैव लेड द फाउंडेशन टू मेक इंडिया डेवलप्ड कंट्री। विकसित भारत की नींव हमने 9 वर्षों में रखने का काम किया है। और जो लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था थी ना जी 2013-14 की, हमने दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का कार्य किया है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। तो कहीं ना कहीं छवि देश की जो बनी वो नेतृत्व के कारण बनी। और नेता इस देश के लिए जनता ने चुनकर दिया है, क्योंकि एक बार नहीं, आपने 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। लेकिन अनुराग ठाकुर जी, विपक्ष का कहना है कि जो कभी सोचा था वो शायद नहीं हुआ। सोचा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर 1 साल में, वो नहीं हुआ। सोचा था कि हर किसी को रोजगार मिलेगा, नहीं हुआ। उनका ये भी कहना है कि गरीबी रेखा के नीचे से लोग बाहर निकालने चाहिए थे, लेकिन बढ़ गए, ऐसा तो सोचा ना था। तो सवाल कई विपक्ष ने उठाए हैं उपलब्धियों के मामले में। विपक्ष को आप कैसे कन्विंस करेंगे? जो आपकी उपलब्धियां हैं, विपक्ष ही अगर नहीं मानेगा, अगर संसद में ही इस पर कंसेंसस नहीं होगा, तो क्या परसेप्शन बाहर तक जाएगी? देखिए, आंकड़ों को तो ना आप झुटला सकती ना विपक्ष झुटला पाएगा। क्या ये सच्चाई नहीं कि 12 करोड़ शौचालय बने? क्या ये सच्चाई नहीं कि 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को रसोई गैस का सिलेंडर मिला? देखिए, सब आंकड़े नहीं, ये सब दिखता है। और मैं कहना चाहता हूं, जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है,
उनकी 4 पीढ़ियां ये नारा लगाती रही, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब मिट गया लेकिन गरीबी नहीं हटी थी। लेकिन गरीब माँ का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना तो 27% गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। और ये मैं नहीं कहता जी, ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के आंकड़े हैं। इस पे कोई विश्वास ना करे तो उनकी देखिए, अगर मुद्रा लोन 34 करोड़ मिलते हैं और 68% महिलाएं हैं तो ऐसा तो नहीं कि वो काम नहीं कर रही होंगी। अगर जीएसटी कभी 1 लाख करोड़ रुपया भी, आज से 1.5 साल पहले कभी 1 लाख करोड़ की भी कलेक्शन नहीं होती थी। पिछले महीने 1,83,000 करोड़ की हुई, 1,83,000 करोड़, और इस महीने 1,53,000 करोड़ रुपीस की। पिछले 16 महीनों में लगातार 1 लाख करोड़ से ज्यादा की जीएसटी कलेक्शन हुई। दैट मीन्स आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग एंड द नंबर सेज इट ऑल दैट India is the fastest growing economy today, and as per the prediction or the report of the Morgan Stanley, the steps taken by the Modi government in the last 9 years, the reforms what we have taken, especially in the 10 sectors, and the kind of capital investment the Modi government has done, even in this budget, 10 lakh crore rupees has been earmarked for the capital investment. That clearly shows that our outlay for the capital investment is 33% higher than the last year, which will boost the growth further. And the indicative number for this financial year 23-24 is 7.2%, which is highest globally, I think, which is a good sign for the Indian economy. So the world is seeing hope in India. They are looking at India with, and we need to live up to those expectations. और इस पे हम सबको इस बात का गर्व होना चाहिए कि कोविड के समय जहां दुनिया के बड़े बड़े देश बहुत लंबे समय तक उससे बाहर नहीं आ पाए, जो भारत के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए गए थे कि इतने लोग भूखमरी महामारी से मरेंगे। आपको याद होगा आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में भी आते थे, चैनल्स में भी, करोड़ों लोग मर जाएंगे। ये भारत की जनता का विश्वास मोदी जी पर था, मोदी जी का फ्रंटलाइन वर्कर्स पर, साइंटिस्ट पर, मैन्युफैक्चरर पर था। तभी जाकर हमारे युवाओं ने और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने जो काम किया, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाने का काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया है। और तो मैं आपको एक इंसिडेंट दिल्ली का ही बता दूं, सुंदर पिचाई जब फेब महीने में यहीं थे, वो अपना अनुभव भी बता रहे थे कि किस तरह से हार्ड कॉपी आज भी उनको आजकल कोविड सर्टिफिकेट की लेके दुनिया भर में जाना पड़ता है, लेकिन भारत के लोगों को तो कोविन ऐप पे डिजिटल सर्टिफिकेट मिला। इसी डिजिटल इंडिया का मजाक कभी कांग्रेस उड़ाती थी, जनधन खातों का मजाक उड़ाती थी। 48 करोड़ जनधन खाते 2 साल में खुले। कांग्रेस कहती थी क्या होगा इसका अर्थव्यवस्था के साथ। ये फर्क पड़ा कि 2 लाख करोड़ रुपया आज उन 48 करोड़ बैंक खातों में है जो इकोनॉमी का हिस्सा बना है, सर्कुलेशन में आया है। छोटी बात नहीं है। गरीब जो कभी 36% ब्याज देता था, आज उसको 10% पे पैसा मिलता। मैं सैकड़ों ऐसे उदाहरण आपको दे सकता हूं, और ये मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये लोग गरीब के नाम पे वोट मांगते रहे, लेकिन गरीब के लिए इन्होंने किया कुछ नहीं। गरीब के लिए किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। लेकिन अनुराग ठाकुर जी, राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स शोषित हैं। दे हैव गॉट अ रॉ डील. Minorities in the society have got a raw deal. Muslims have got a raw deal. Sikhs have got a raw deal. They also say democracy is dying in this country. They also point out that the biggest achievement of your government is that you have let loose agencies on all opposition leaders. There are many issues of confrontation between the opposition and your government. Of course, you're on two sides of the aisle. There will be differences. But have we reached a complete break point as far as dialogue is concerned? देखिए, डायलॉग के बिना तो लोकतंत्र नहीं चलते हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, और एक एक बात का आपका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। आपने कहा कि अनुसूचित जाति पर, एससी वर्ग पर अत्याचार होते हैं। आपने पूरी बात नहीं की। राहुल गांधी जी ने कहा था 80 के दशक में केंद्र और उत्तर प्रदेश में अत्याचार यही था।
तो 80 के दशक में केंद्र में माननीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और एससी पर अत्याचार होते थे। राहुल गांधी जी ने यहां तो नहीं, विदेशी धरती पर जाके मान ही लिया है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसी मूल मंत्र के साथ काम करती है। और अगर आप इन सभी बेनिफिट्स को देखेंगे जो मकान से लेके पानी के कनेक्शन से लेके जनधन खाते तक है या बाकी योजनाओं के है, इसका सबसे बड़ा लाभ किसी को मिला है तो एससी, एसटी और हमारे अल्पसंख्यक समाज को, जिनको कांग्रेस ने हाशिए पर धकेल दिया था, केवल वोट बैंक के लिए किया था। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हम सशक्तिकरण करने में विश्वास रखते हैं। यही अंतर है, ये अंतर है। आपके कुछ और भी सवाल थे इसके साथ? एजेंसीज, ईडी, सीबीआई। देखिए 2G, CWG, कोल स्कैम से लेके अंतरिक्ष घोटाले से लेके बाकी सब कांग्रेस के समय हुआ। यहां तक नहीं, नेशनल हेराल्ड घोटाले में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी बेल पर हैं, जमानत पर हैं, भ्रष्टाचार के मामले पर हैं। अब ये कोर्ट भी देश में है, जांच चल रही है इन सबके सामने। अब राहुल गांधी जी कहते हैं कि मुझे MP नहीं रखा गया, मुझे सजा 2 साल की सुना दी। बयान तो मैंने नहीं दिया था, राहुल गांधी जी ने दिया था, सजा भी उनको ही मिलनी थी। अब OBC समाज का अपमान करोगे, उनसे माफी भी नहीं मांगोगे और कोर्ट में जाके कोर्ट ने आपको कई बार अवसर दिए, 3 साल आपका केस चला और उससे पिछले केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जरा सोच के अगली बार बयान देना, नहीं तो आफत में भी आ सकते हो। लेकिन राहुल गांधी जी बाज नहीं आए। एक मुकदमा नहीं, ऐसे 7 मुकदमे उनके ऊपर अलग अलग चल रहे हैं जहां पर उन्होंने अनाप शनाप बयानबाजी की है और उसके चलते ये हुआ। तो इसमें दोष किसी और पर देने के बजाय अपनी बोलबाणी पर थोड़ा संयम रखना चाहिए था, उसके कारण हुआ है। लेकिन अनुराग ठाकुर जी, CWG, 2G, कोल स्कैम, रॉबर्ट वाड्रा का इशू चुनाव से पहले आपने भी बहुत उठाया था। इन किसी भी केस में कोई भी कन्विक्शन, कोई भी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, 9 साल निकल गए। तो सवाल तो पूछा जाएगा कि क्या ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस थे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और आप अपने यहाँ के कानून व्यवस्था को देखोगे तो डेट पे डेट भी कई बार बहुत मिलती है। राहुल गांधी का वर्डिक्ट बहुत जल्दी आया, डेफामेशन 3 साल के बाद। 9 साल हो गए बाकी केसेस 3 साल के बाद 9 साल। दोनों के केस में अंतर है। यहाँ पे उनके बयान के कारण उनको सजा मिली है, वहां पर उनके आर्थिक अपराध के कारण, भ्रष्टाचार के कारण, जहां आपको सबूत भी जुटाने हैं और सारे तथ्य चार्जशीट में फाइल करने, उसमें थोड़ा समय लगता है। जांच एजेंसी अपना काम कर रही होंगी। अनुराग ठाकुर जी, जिस दिन देश के नए संसद का उद्घाटन हो रहा था, बहुत बड़ी पहल की आपकी सरकार ने, एक नया संसद भवन बना, लेकिन साथ ही उस दिन तस्वीरें आई स्ट्राइकिंग उन रेसलर्स की, उन लड़कियों की जो हक मांग रही हैं, जिन्होंने FIR दर्ज किया है एंड पॉक्सो केस भी लगा है इस केस में। मैं पूछना चाहती हूँ, ये कौन सा भारत है जहाँ इन लड़कियों की बात नहीं सुनी जा रही और एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस जो है उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं, 40 दिन से लड़कियां धरने पर बैठी। देखिए, पहली बात तो मैं कहूं कि संसद भवन जो नया बनकर तैयार हुआ, शायद आप भी उस कार्यक्रम में थी, ये भारत को आज़ादी के 75वें वर्ष में मिला और उस समय मिला जब दुनिया में भारत का एक नया स्थान बना है। नए भारत की बुलंद तस्वीर आज देश के सामने देखने को मिलती है। एक नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती है और भारत की उपलब्धियों के कारण मिलती है। और नए संसद भवन का कुछ राजनीतिक दलों ने विरोध भी किया, बहिष्कार किया। और मैं कहूँगा, राहुल गांधी जी कभी पार्लियामेंट ना चलने के बहाने बनाते थे, ना आने के बहाने बनाते थे। अब वो सदस्य खुद नहीं रहे तो बहिष्कार करने के भी कई बहाने बनाने लगे और उनका दल भी उसमें नहीं आया। जहाँ तक रेसलर्स की आपने बात कही, देखिए, खिलाड़ी हो या कोई भी महिला हो, किसी के साथ भी अगर किसी तरह की कोई अत्याचार हुआ हो तो उसको न्याय जल्द मिलना चाहिए। मैं इसके लिए आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जिस घटना का उल्लेख वहाँ पे किया गया वो लगभग 7 वर्ष पुरानी है और जब
रेसलर्स मुझसे मिलने, मैंने ही उनको न्योता दिया था जनवरी महीने में मिलने के लिए। तब उनकी मांग थी, मैंने तब भी पूछा था कि एफआईआर किसी भी पुलिस थाने में दर्ज हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपके समक्ष इस बात को रखना चाहते हैं ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हमने कमेटी बनाई, उनसे पूछ के बनाई, कमेटी बनाई, कमेटी में मेंबर उन्होंने ऐड करने के लिए कहा, वो भी किया। कमेटी ने जितने लोगों को उन्होंने नाम लिए सबको बुला के उसकी जांच भी की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट फाइल की, उसके बाद दिल्ली पुलिस को उसको रिपोर्ट को सौंपा गया। इन द मीन टाइम आईओए को बोल के, क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन डायरेक्टली गवर्न करता है सब फेडरेशंस को, तो उनको कहा गया कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाइए ताकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया डे टू डे एक्टिविटीज़ ना देखें। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया डे टू डे एक्टिविटीज़ कुछ नहीं देखती, ना उनके अधिकारी के पास कोई आज अधिकार है। आईओए की कमेटी ने अभी ट्रायल्स कराया जिसमें हज़ारों खिलाड़ियों ने भाग लिया, उनका कैंप चल रहा है। 5 तारीख को अगला ट्रायल है जिसके लिए 2500 के लगभग खिलाड़ियों ने अभी रजिस्टर कर चुके हैं, उनका सिलेक्शन होने वाला है, वो भी हुआ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने लेवल पे कहा कि दिल्ली पुलिस से आप एफआईआर मांगते तो दायर कर दी, उन्होंने दर्ज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज टू इंटरवीन टू रजिस्टर एन एफआईआर. The committee you are talking about was set up in January. We are sitting in June. आप जैसे सीनियर पत्रकार के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, और देश के सामने भी, पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के लिए खिलाड़ी को ही जाना था। हमारे पास उन्होंने जब अपनी बात रखी कि इंटरनल कमेटी के लिए, हमने वो जो कमेटी की जांच की, जांच के बाद आईओ को कहा गया कि अपने कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाए। उन्होंने बनाया, वो कमेटी को चला भी रही हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं, टीम वो भेज रहे हैं, सारी पेमेंट्स वो कर रहे हैं। तो डब्ल्यूएफआई का आज के समय में कोई रोल नहीं है, 1% कोई रोल नहीं है। पुलिस जांच में अगर किसी भी नागरिक के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट होती है तो वहाँ पे जांच करने के बाद चार्जशीट फाइल करके उसके बाद उचित कार्रवाई की जाती है। पुलिस ने जांच अपनी लगभग पूरी कर ली होगी, चार्जशीट वो दायर करने वाले हैं और उसके बाद उचित कार्रवाई भी करेंगे। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, हमने प्लेयर्स ने जो जो जब जब कहा, सारी बातें इनके कमेटी बनाने से लेके, आईओ को से लेके, एफआईआर से लेके, जब जब जो जो कहा वैसे ही सब कुछ हुआ है। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी होने का इंतज़ार, चार्जशीट फाइल करने का इंतज़ार करना चाहिए। और 38 दिन जब तक हमारे सभी एथलीट्स, जो 4 एथलीट्स हमारे वहाँ पे बैठे हैं, वो 38 दिन बैठे, कभी किसी ने कोई मना नहीं किया। उन्होंने कैंडल मार्च करना था तब भी। हम न्याय दिलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, उचित कार्रवाई हो, इसमें किसी का कोई पक्ष लेने की बात ही नहीं है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमें किसी का कोई पक्ष नहीं चाहिए, हमें निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई चाहिए, जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। Mr. Anurag Thakur, you've given a long response. I have 2 basic points on this. Committee set up in January, we are sitting in June. The wrestlers, our athletes, our medal winners have been sitting on a dharna for 40 days. You want an unbiased investigation, the country wants an unbiased investigation. But the fact of the matter is that there is a question of morality. The question is, because the person concerned against whom the charges have been made happens to be a BJP member of parliament, it is creating a perception of justice not being delivered. My straight question to you is, 40 days is one too many for the national heroes to be sitting on a dharna. Can we expect the government to find a solution to this and end this national shame? नाविका जी, जब एफआईआर हुई उसके बाद जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं वही कह रहा हूं कि जांच पुलिस कर रही है, मेरा विभाग नहीं करता है। और सरकार निष्पक्ष जांच चाहती है हर किसी के। उसमें पहले भी जब कमेटी बैठी तो कितने लोगों ने अपने बयान दर्ज करवाए, जो जो करवाना चाहता था हर किसी को मौका दिया गया। 14 मीटिंग्स उसकी की गई। मैरी कॉम जैसी 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन उसके मेंबर हैं, योगेश्वर दत्त जैसे ओलंपियन मेडलिस्ट उसके मेंबर हैं, बड़े खिलाड़ी उसके मेंबर्स हैं जो मेडलिस्ट हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और एथलीट्स को ही इसका हिस्सा बनाया गया, जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर जो उनको जानते थे उन्हीं को इसका हिस्सा बनाया गया है, ताकि हर कोई अपना पक्ष उनके सामने रख सके। बड़ी विस्तार में उनकी बात सुनी गई, उसके बाद ही उचित कदम उठाए गए हैं।
और इसीलिए रिपोर्ट पुलिस को सौंपी गई और पुलिस ने उस पर एफआईआर की है। इसलिए आईओ को कहा गया कि डे टू डे एक्टिविटीज के लिए कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाए, तो कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं न्याय मिले, लेकिन प्रक्रिया का पालन करके, वो जांच पूरी करके ही होगा। It's now even being noticed by the International Olympic Association. Do you think, India, एक तरफ हमारी achievements की कहानी और दूसरी तरफ ये कहानी जहाँ रोज नोटिस पे डाला जाता है इंडिया को, is it doing anything for India's image? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, पिछले 9 सालों में खेल और खिलाड़ियों के लिए जितना मोदी सरकार ने किया, पहले की किसी सरकार ने नहीं किया। ना केवल सुविधाएं, मनोबल बढ़ाने तक का काम से लेकर बजट 874 करोड़ से बढ़ाकर 2800 करोड़ तक कर देना, ये पिछले 3 गुना ज़्यादा बढ़ा है। टॉप जैसी स्कीम को लाना, खिलाड़ियों को पूरा बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रेनिंग, पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है। 6 लाख रुपया जेब खर्च, यानी कि 50,000 रुपया महीना अलग से देती है। रिवॉर्ड्स के अलावा जो बाकी ट्रेनिंग के लिए इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे कोई कोच चाहिए हो, उसका पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है। यही कारण है कि टोक्यो ओलंपिक्स में 7 मेडल्स और पैरालंपिक्स में 19, डेफ ओलंपिक्स में 20, कॉमनवेल्थ गेम्स में 61 और 22 गोल्ड मेडल। इसी तरह से वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में एक नहीं 4 गोल्ड मेडल भारत ने पहली बार जीते हैं वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। तो सरकार लगातार खेल खिलाड़ियों के लिए ही कर रही है। सुविधाओं में भी कोई भी कमी नहीं रखी। और जहां तक सुरक्षा की बात है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने के लिए हमने सभी फेडरेशंस को कहा, और उस पर भी सभी फेडरेशन को हम खुद चेक कर रहे हैं कि उनकी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी हो और उसको महिला अथॉरिटी हेड कर रही हो। Well, of course, there are many other achievements, but we as citizens of India would hope for an early resolution to this standoff that is taking place. हम सब चाहते हैं जल्द हो, इसमें कोई दो राय नहीं। जल्द जांच पूरी हो और जल्द चार्जशीट दायर हो। चार्जशीट कब तक बिल्कुल, आएगी? ये पुलिस का काम है, लेकिन जल्द जांच पूरी होकर चार्जशीट दायर हो। मिस्टर अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी जी ने एक और स्टेटमेंट दिया है। आई कम बैक टू पॉलिटिक्स। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग एक सेक्युलर पार्टी है। वुड यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट? अब राहुल गांधी जी की मजबूरी हो गई है। अमेठी हार चुके हैं, वायनाड में लड़ना है, तो कभी मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करनी, कभी मुस्लिम लीग की बात करनी है। और दुख की बात तो यह है कि उसको सेक्युलर कह देना और फिर ये कहना कि ये जिन्ना की मुस्लिम लीग से अलग है। ये वही लोग हैं जो पार्टीशन के समय यहां पर रह गए थे, जिन्होंने उस समय की मुस्लिम लीग के सदस्य होने के बाद, पार्टीशन के बाद यहीं पे मुस्लिम लीग बनाई भी, और फिर एमपी तक बने रहे, राज्यसभा के भी बने। और यही नहीं, जो मुसलमानों के लिए अलग से सीट रिजर्वेशन चाहते थे, शरिया कानून लागू करना चाहते थे, ये कहीं और नहीं। मोहम्मद इस्लाम की बात करें, ये उसके सदस्य थे। राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं, क्या काम था इनका। ये सब आपके सामने इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि ये मुसलमानों के लिए अलग से सीट रिजर्वेशन भी चाहते रहे, शरिया कानून भी लागू करना चाहते रहे, और ये उसी मुस्लिम लीग का हिस्सा है। सोच में केवल राहुल गांधी जी के और कांग्रेस में इतना मैं कहूँगा, उनको हिंदू आतंकवाद नजर आता है और मुस्लिम लीग सेकुलर नजर आती है। लेकिन और दुख की बात यह है कि विदेशों में जाकर भारत का अपमान करने में वो कहीं पीछे नहीं रहते, कहीं पे पीछे नहीं रहते। अनुराग ठाकुर जी, एक तरफ कांग्रेस के साथ स्टैंड ऑफ है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से हमें एक वर्डिक्ट मिला टू डिसाइड ट्रांसफर पोस्टिंग्स, उस पर आपका ऑर्डिनेंस आ गया है। तीसरी तरफ तेलंगाना में कॉन्फ्रंटेशन है। तेलंगाना में जो सरकार है उसने आज गवर्नर को नहीं इनवाइट किया है। कैन यू गेट अलोंग विद एनी ऑफ दीज पार्टीज? देखिए, आप दुनिया भर के देशों में देखेंगे, अमेरिका से लेकर बाकी देशों में भी, जहाँ नेशनल कैपिटल रीजन है, वहाँ दुनिया भर की एम्बेसीज हैं, डिप्लोमेट्स हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो देश की सुरक्षा की दृष्टि से और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। और जब ये कानून भी आया था कि यहाँ पे एक असेंबली बनाने का समय, उस समय बहुत बड़ी डिबेट हुई थी।
उस समय भी ये था कि इसको यहाँ पर क्या करना चाहिए, और आप कोई ऐसी स्थिति किसी देश में खड़ी नहीं करना चाहते जहाँ पर नेशनल कैपिटल रीजन में कोई लॉगर हेड्स पे हो और ऐसे निर्णय करने पे हो जिससे कि देश की बदनामी हो। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में बड़ी स्पष्टता के साथ कहा गया है, जो जो भारत सरकार ने किया, जो जो भारत सरकार के दायरे में आता है और कानून में परिवर्तन करके भी कुछ लाना हो तो उसके लिए भी सरकार सक्षम है, तो हम लोग वो किया है। लेकिन every opposition party now has made this ordinance issue a plank on which they will come together. देखिए, आप नॉन इशू को इशू बनाने जाएंगे उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमें राष्ट्र हित में निर्णय करने हमने किए हैं और वो किसी के खिलाफ नहीं। अगर 15 साल तक जो इस दिल्ली की मुख्यमंत्री रही स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी, उनके पुत्र जो कई बार सांसद रहे संदीप दीक्षित जी, आप उनके बयान भी देखिए, बाकियों के भी देखिए, सब लोग मानते हैं कि सही दिशा में एक कदम उठाया गया है और देश के हित में है। So on one thing, at least the Congress and the BJP have an agreement. It's not about Congress and BJP. This is about country and country's image. Mr. Anurag Thakur, elections are around the corner. और कम से कम अराजकता में जो लोग विश्वास करते हैं, आप उनके भरोसे देश की छवि नहीं रख सकते। एक हैं जो इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी जब विदेश में गए तो कोई मौका नहीं छोड़ते देश को अपमानित करने का। आप देखिए, जो मंच उनको दिया गया उसके पीछे कौन लोग हैं। वहां भारत का अपमान होता है, भारत के राष्ट्रगान का अपमान होता है, भारत के झंडे का अपमान होता है, भारत विरोधी नारे लगते हैं और यहां तक कि राहुल गांधी जी भी कोई कसर नहीं छोड़ते जहां पे भारत का अपमान करने में कोई कसर छोड़ी। और ये एक बार नहीं, अनेकों बार हुआ है और ये भारत स्वीकार नहीं कर सकता। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी भारत से बाहर कदम रखते हैं तो किसी देश के प्रधानमंत्री उनके पांव छू के गले लगाकर उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। दो देश उनको अपना हाईएस्ट अवार्ड देते हैं अपने देश का। अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी सीट से उठकर उनको गले लगाने आते हैं और कहते हैं कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूं अमेरिका में होस्ट करने के लिए, मेरे पास टिकटों की कमी आ गई, इतने वहां पर डिमांड है। दूसरी ओर राहुल गांधी जी को किसी और की ना सुननी हो तो कम से कम इटली की प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मोदी इज वर्ल्ड्स मोस्ट लव्ड लीडर। 3 सर्वेस में आया है, 3 साल में, 3 सालों में आया कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने तो कह दिया मोदी इज द बॉस। ये केवल मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये भारत और भारतीयों का सम्मान। राहुल गांधी जी अपनी एक यात्रा में जाके देश को अपमानित करने का काम करते, अनाप शनाप बोलते हैं। अब वो 2 बार देश का चुनाव ना जीत सके तो आप कह दो कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। वो चुनाव हार जाएं तो ईवीएम खराब है, चुनाव जीत जाएं तो चुप हो जाते हैं। ऐसे कैसे नाविका जी दुनिया चलती है। कर्नाटक का चुनाव वो जीत गए हैं तो अभी ईवीएम पे बात नहीं की। नहीं, अब इस बार तो नहीं सुनाई दी कोई बात। लेकिन अब 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं एंड आफ्टर दैट द बिग इलेक्शन ऑफ 2024, हाउ डू यू सी योर पार्टी मूविंग टुवर्ड्स दैट? मैं तो यही कहूंगा कि आपके इस मंच से देश की जनता का आभार, जिन्होंने 9 साल मोदी जी को सेवा करने का अवसर दिया। और मोदी जी ने दिन रात एक सेवा करके, देखिए, अपनी माता जी के देहांत के बाद भी 2 घंटे के अंदर वो वापस देश की सेवा करने लगे। आज तक 75 साल में शायद ही कोई ऐसे प्रधानमंत्री आए। अभी भी 6 दिन की यात्रा थी, दुनिया के 2 दर्जन लगभग 23 नेताओं से, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिले। 50 मीटिंग्स हुई 6 दिनों में। इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं उनके साथ, साहित्यकार, बुद्धिजीवी, उद्यमी, सबके साथ हुई। और जब इंडिया लैंड किए तो उसके 2.5 घंटे के बाद उनके फिर प्रोग्राम शुरू हो गए। उनका एक एक पल देश के लिए समर्पित है और उन्होंने अपने 9 सालों में देश के लिए पाई बचाई भी और देश की भलाई कराई भी। और ये पाई बचाने का काम टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया, ट्रांसपेरेंसी लाके किया, देश की अकाउंटेबिलिटी तय की सिस्टम की। मैं कहना चाहता हूं नाविका जी, ये जो हमारे 4 करोड़ 70 लाख फर्जी राशन कार्ड थे उनको खत्म किया हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। 4 करोड़ 17 लाख के लगभग
ये जो आपके एलपीजी सिलेंडर के नकली बनते थे और कमर्शियल की बजाय वो यही यूज करते थे, उसको खत्म किया। देश का कितना पैसा बचा? 2,70,000 करोड़ रुपया आप टैक्स पेयर्स का पैसा बचाया है मोदी जी ने। ये दिखता है। यू आर पेइंग टैक्सेस एंड योर hard earned money and the taxes what you have paid has been rightly used to bring the poor out of the poverty line. तो ये एलिवेशन उनका हुआ है, कहीं ना कहीं बाहर निकालने का काम हुआ। ये पक्के मकान 3.5 करोड़ ऐसे नहीं बने। ये सब काम जो हुए इनके लिए मुफ्त में 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिलता है। पहले इतने करोड़ों लोग हर साल गरीबी रेखा के नीचे जाते थे क्योंकि इलाज नहीं करवा पाते थे। वो सोचते थे इलाज करवाऊं कि परिवार चलाऊं, उसको मुसीबत थी अपनी जान बचाऊं कि परिवार को बचाऊं। आज उसको सोचना नहीं पड़ता। 5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान भारत में मोदी सरकार देती है। आज गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है क्योंकि 70 साल में नाविका जी 80,000 सीटें थी एमबीबीएस की, हमने 9 साल में 68,000 से ज्यादा सीट बनाई। 9 साल में 70 साल में 700 यूनिवर्सिटीज थी, हमने 390 यूनिवर्सिटीज 9 साल में बनाई। हमने 9 साल में 7 आईआईटी 7 आईएम बनाए। और यही नहीं, 2014 तक केवल 5 शहरों में मेट्रो थी, हमने 9 सालों में 15 शहरों तक पहुंचाई है। 900 किलोमीटर बन गई, 900 किलोमीटर बन रही है। वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द नेक्स्ट 2 years। और यही नहीं, कांग्रेस के समय 0 वाटरवेज थे, हम 111 वाटरवेज पे काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने खाता नहीं खोला था ना वाटरवेज में ना वंदे भारत में, 0 थे, डक पर थे। हमने 21 वंदे भारत मात्र 4 सालों में चलाकर दिखाई। और सड़कों की अगर नेशनल हाईवे की मैं बात करूं, 2014 तक का एवरेज देखेंगे तो 1362 किलोमीटर पर ईयर आता था उस समय 14 तक। पिछले 9 सालों में 5,985 किलोमीटर, 4.5 टाइम्स मोर। आप प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की योजना को देखिए, 2014 तक 3.5 लाख किलोमीटर थी, इन 9 सालों में 7 लाख किलोमीटर से ज्यादा बनी। ये आंकड़े नहीं है साहब, ये धरातल पर आपको बदलाव देखने को मिलेगा। मैं अपने आप में से कोई हिमाचल गया कभी? सब गए हैं। अब आप अगली बार अभी कुछ दिनों के बाद आएंगे तो कीरतपुर से लेके बिलासपुर, मंडी, मनाली की रोड जो है 8 घंटे लगते थे यहां से जाने में, अब सिर्फ 4 घंटे लगेंगे क्योंकि टनल्स बना दी हैं, सड़क सीधी कर दी है। शिमला जाने तक 3.5-4 घंटे लगते थे, अब 2.25-2.5 घंटे में पहुंचते हैं। अभी सड़क बननी बाकी है तो 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे चंडीगढ़ से। इसी तरह से धर्मशाला से शिमला का टाइम 8 घंटे लगता है, वो 3.5 घंटे रह जाएगा। ये मोदी सरकार बना रही है। 10,000 फीट की हाइट पे अटल टनल, कांग्रेस ने 10 साल में उसको चलाया नहीं, अटल जी नींव पत्थर रख के गए थे, मोदी जी ने पूरी कराई। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल एट द हाइट ऑफ 10,000 फीट। अब हम लेह तक टनल्स बनवा रहे हैं। अगले 2-3 साल के अंदर लेह से लेके कन्याकुमारी तक आप 365 दिन जा सकते हैं, चाहे जितनी मर्जी बर्फ पड़ी होगी, टनल्स बनी होंगी। आप रोड यात्रा पर जाइए, आपके लिए पूरे देश भर में नेटवर्क बनेगा। नाविका जी, ये क्यों हो रहा है? आप हवाई यात्रा तो नहीं करते होंगे आप, अब तो हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करता है क्योंकि उड़ान योजना चली है। 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट थे, दैट मींस एवरेज इज 1.2 एयरपोर्ट पर ईयर, एंड इन लास्ट 9 years वी हैव मेड न्यू 74 एयरपोर्ट्स, यानी कि वो 2014 तक 74 एयरपोर्ट, हमने 9 सालों में 74 एयरपोर्ट, विच इज 8.2 पर ईयर, 8 गुना ज्यादा। आप किसी भी क्षेत्र में कोई आंकड़ा मैं आप शाम तक बैठाइए, मैं आप सबका जवाब देने के लिए तैयार हूं। हमने काम किया है, इसलिए नंबर्स को लेके आ रहे हैं। अब मेरे नंबर्स पे विश्वास नहीं करना, मॉर्गन स्टेनले के तो कर लो, आरबीआई गवर्नर के तो कर लो। उन्होंने भी कहा है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, जिसमें दुनिया को ब्राइट स्पॉट दिखता है और 7.2% की जीडीपी की दर से बढ़ने वाली है, दुनिया को ब्राइट स्पॉट दिखता है, राहुल गांधी जी को उसमें भी काले चश्मे से कुछ ना कुछ दिखता है। अपने देश के लिए नाविका जी, दुख की बात यह है कि जहां अगले महीने प्रधानमंत्री जी जाएंगे, वहां पर पहले जाकर देश के बारे में अपमानित करना और गलत बयानबाजी करने का काम राहुल गांधी जी करते हैं। उनको देश से माफी मांगनी चाहिए।
वो कहते हैं देश में माहौल खराब। अरे साहब, देश आगे बढ़ रहा है एक एक करके। हमारी इंडस्ट्री अच्छा करें, हमारे बैंक्स, जो इनके समय बैंक्स हमारे बैंकरप्सी के उस पे आ गए थे, आज हमारे छोटे से छोटा बैंक भी प्रॉफिट में है। क्यों? 5R हमने जो कोविड के टाइम पे भी किए। वैसे तो अरुण जी के समय हमने 2019 के आसपास इसको शुरू कर दिया था। आज आप देखिए हमारे जो बैंक कभी बेचने की स्थिति में आ गए थे, बंद करने की स्थिति में, वो भी प्रॉफिट में है। सो वी हैव ब्रॉट इन रिफॉर्म्स, वी हैव ट्रांसफॉर्म द सिस्टम, एंड दैट इज द परफॉर्मेंस ऑफ मोदी गवर्नमेंट। तो जो उस समय कहते हैं ना रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म करके, वो अभी हमने किया है 9 साल में। So let's see what happens in 2024, whether people of India will decide that this pace of reforms and this report card is something that they believe in. But thank you very much, Mr. Anurag Thakur. Thank you for joining us right here on the India Economic Conclave. A big round of applause for the Union Sports INB Minister Anurag Thakur. देखिए, जिस तरह से आपने तालियां मार के मोदी जी का अभिनंदन किया है, मैं आपके बाद में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इतना जरूर कहूँगा, स्टेबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एनी कंट्री. The way we are progressing, it is very important that country should keep this growth rate high under the able leadership of Prime Minister Modi, और स्थिरता निरंतरता बनी रहे, और 2024 में भी 300 पार मोदी सरकार ही बने, इसके लिए भी आप अपना आशीर्वाद देते रहें. So the campaign for 2024 officially launched from the dais of the India Economic Conclave. Thank you very much, Mr. Anurag Thakur. Thank you very much, Anurag Thakurji. Navika, thank you for joining us. Well, ladies and gentlemen, our next panel now talks about not just information technology in its latent stage, but also talks about artificial intelligence, Padmaja. For the last 2 days, we've heard about, ChatGPT, Bard, and what could they really do to the face of AI. And not just that, remember, none of it is possible without telecom. So we have a very special panel lined up next. And ladies and gentlemen, please put your hands together for a mighty panel. Vice Chairman and MD, Bharti Enterprises, Rajan Bharti Mittal, and also the founder and CEO of VNI Systems, Dr. Vishal Sikka, in an exciting session with Managing Editor, Times Network, Business Head, Times Influence, Mihir Bhatt. Thank you, Aisha and Padmaja. Vishal, thanks for joining us. Rajan, thanks for joining us. I'll start with Vishal because everybody is talking about AI and ChatGPT. So Vishal, my first question to you is, there are two different views. Some people believe that AI is going to, the day before yesterday I was watching a report on BBC, and somebody made a statement that AI is capable of triggering an extinction of human race. You have been working very closely in this space. Can you just throw some light on these kind of statements? The risk that AI has, so I was one of the signers of the original letter that was sent requesting a pause on the super large language models for a few months, just so everybody can catch up to them. The risk here that I see is not so much that these systems are somehow super intelligent and all that. The risk is that people can do dangerous things with them, and they can do dangerous things with them very, very quickly. And at a very large scale. It is an unprecedented scale at which damage can happen. So this is the risk that we see. And I think we need to keep that separate from an assessment of whether these systems are intelligent or not. Right. But Vishal, it's such an unknown territory that, everybody is trying to figure out different parts of an unknown animal. So I have Rajan also sitting here with me, and they obviously operate one of the largest telecom companies in the world and are at the forefront of 5G revolution in India.
and many other countries. Rajan, there is so much discussion about AI, and I mean, it started with 5G, then went on to metaverse, and now AI. What is your take as a key stakeholder in this industry? As Vishal has rightly pointed out, it is early days, but we have to be very watchful. We have seen the disruption technology brings around the world, around the globe. Social media itself, you will see, has done a lot of stuff that probably was not even thought about. So we'll have to have some, red lines drawn when the AI is spoken about. And the experts are actually engaged now with the stakeholders, with the governments of the day. If you see, if you must have read the last week, EU and all the AI, supposedly people who are now putting the benchmark on AI, are in discussion. What are the red lines for this AI to be coming? It has its own disruption that will happen. Will it be something which is under control, as all the regulations do? And we see in every technology, regulation is a must. Anything which is unregulated will bring huge disruption, negatively as well, positively as well. India has its own space. Technology, India is actually now leapfrogging. So we should not shy away. We should adopt, but we should be watchful. Vishal, I have a follow-up question for you. One is the desire to regulate AI and its application. But I think the fundamental question is, can it be regulated? What is your take? Oh, absolutely. It can be regulated. We have regulated nuclear technology before. We regulate dangerous chemicals. We have regulated very dangerous technologies very successfully. And same thing, it's a tool that we have built. It is easy and it is possible to regulate this, and we must. Many countries are now working on this. Our government in India is working on it. So yeah, and the regulation is absolutely necessary. Just like we regulate, as I'm speaking to you, I'm sitting in a 45-story tall building. This building is not going to fall down, or the builders don't say there is a 30% chance that this building could just crumble. It doesn't work like that. We need to be able to build responsible technologies, trustworthy technologies out of these basic tools. And the fundamental issue that I see is an issue of education. Right now, there are far too few people who understand these technologies. If I give you some statistics on that, my wife, Vandana, is on the board of Code.org, which is a nonprofit that brings coding, computer science to people, to kids and all that. And she always says that there is, in the dark ages, when the dark ages were going to the middle ages, about 6% of the world was able to read and write. The literacy rates were 6%. Today, the number of people who can program is about 1%, if you are generous. And the number of people who can build you an AI application is probably less than 2 million. 2 million out of 8 billion people in the world. And the number of people who could explain to you, technically how ChatGPT works is probably 25, 30,000. That's it. So this number needs to be 100x, 1000x higher. And I think that's, for India, for us, that is the huge opportunity, is to be able to not just create users of this technology, but builders of this technology, who are able to, and that removes the fear of it, that removes the mystery around it. The more that we understand it, the more we are able to do something with it, and we shed the fear of it. Right. So Vishal, this whole fear and, sort of statements that we keep reading that AI will take jobs and do those kind of stuff, you believe that that's highly misplaced? It is. Well, if people sit still and don't learn and don't understand how these technologies can improve the work that they do, then for sure it will take those jobs. But if people start to use these technologies to improve their productivity and do new things with it and do things better with it, then this will be a great productivity enhancer, a great amplifier of our abilities. So it is just it is up to us, Eric Clapton had this beautiful song, "It's in the way that you use it." And it is how we use these technologies that is going to make a big difference. Right.
Rajan, you are obviously, I mean, technology is very critical for your business as well. And we have seen, I mean, obviously the early indications are that 5G is going to revolutionize a lot of things. But then there is metaverse and obviously AI. But I will restrict my question to currently 5G and going forward, metaverse maybe. Its impact on retail, the way we use services, the way we consume data, the way we consume entertainment. How do you see that changing going forward? You know, one point I want to pick up what Vishal said. Every technology will bring disruption. Some jobs will be lost. We should be cognizant of that and we should be ready for that. But if you really see the landscape over, let's say, 20 years, there are so many other jobs that the technology creates. So we have to adopt that. There are more jobs to be created with any new technology that comes in than the jobs lost. Having said that, on 5G, I think India is rolling out, probably this is the largest rollout the world would have ever seen. And I think for a country like India, where the connectivity is most important, and more sober in the hinterlands. And that's what we are wanting to do that now. The services, as the consumption story of India really rises. And India being in a, I have to say, a sweet spot of the way economic velocity the India is shaping up with, it's important that we connect the urban and the rural digital divide that has been there for a while. All these services that we are seeing today, be it e-commerce, be it OTTs, be it social media. Honestly, when I travel around India, it amazes me the kind of the younger generation that is taking to all these services, which has never heard about it. It used to be an urban phenomena, so to speak. Today, you go to the tier 3, tier 4 rural areas. I mean, it's so all-pervasive. Not only that is helping all the services to connect with all the manufacturing side on one side, it's also the financial services. People are unbanked in a country like India, and banks will never be able to reach out. Digital mobiles, the UPI system, the payment bank systems, we are connecting the whole ecosystem. So 5G will play its own way that we connect the country on one side. On the other side is the industrial needs of the 5G. Huge automation, real-time work. Today, when you go to the new factories that are being set up, they are being set up with all the, with the backdrop of the technology. Where lesser people are involved, more machine work is involved, which needs real-time connectivity. And that's what 5G will provide. Right. Right. Vishal, in this context, because a lot of these, the industries which are dependent on consumer behavior, they also have to go through a lot of data crunching, a lot of analysis, and obviously, I mean, some sort of basic coding and all. To what extent, going forward, AI will replace some of these mundane tasks? The state of it today is that, so if you look at GPT-4 or even GPT 3.5 or the models from Google, these models do a surprisingly good job of software development. But it is being used so far to enhance the productivity of an individual software developer. And so what you need, even though it does a very good job, it often makes mistakes. And so you need someone supervising what it is doing. So if you imagine a situation where you have a software developer plus this AI tool using their work versus a couple of software developers or a team of software developers, you start to see significant productivity improvement. So what you will see, and what you're already starting to see is, for example, there is a product from Microsoft called Copilot, and there are several other similar products out there that are significantly enhancing the productivity of a software programmer today. Soon you will see this applying to teams of software programmers. And so, as Mr. Mittal was saying, similar to how we use other kinds of tools, it behooves us to start to use this technology to make our teams much more productive, able to do better programming. Because this AI tool is not only helping you write code, it actually has access to all the code that has ever been written, that it can bring to bear on whatever it is that you are trying to do. So that's a very powerful ability. So yeah, I do see that impacting software development in a very significant way.
And the teams, the people, the organizations that embrace that are going to benefit from it. The ones that don't are clearly going to see a significant disruption from it. Right. So Vishal, can you just elaborate a bit on this? I mean, obviously tech companies are going to be at the forefront in terms of the usage and application of AI. But apart from that, eventually, which are the sectors and industries where you see maximum impact, or I would say maximum usage of AI? Within companies, so companies that do a lot more knowledge-oriented work, a lot more informational work, whether it is services companies, software development companies, companies that work on knowledge process outsourcing, BPO, or just companies that work with a lot of informational tasks, you know, text and things like this, as opposed to, for example, companies that build, that manufacture things and so on. So one level of applications that we see is in helping improve the operations of every company, whether it is financial operations, HR, you know, supply chain operations and things of this nature. So the operational tasks, the B tasks, as Engelbart would have said, but also in the companies in the services world, it impacts the very products themselves. So there, the nature of the work done by the core employees also gets impacted by this. So there you will see more impact from this. Already we see, for example, in analysis tasks, business analysts, and the work that is done to analyze opportunities, to do product research, things of this nature. These are already being AI-based applications. This language model-based applications are already being applied to that. Some other areas that are very interesting are, for example, in pharmaceutical world, understanding chemical compositions, understanding molecules, or doing genomic data analysis, sequencing prediction. These are also, in a sense, informational tasks. And these are also, I serve on the board of GSK, and we are doing a lot of work in this regard, where genomic data can be analyzed using large language models that are specifically trained on understanding these sequences, or discovery of new compounds, new molecules that is aided by this. So any company whose primary work is informational in nature can stand to dramatically benefit from it, or be disrupted by it, depending on what attitude they take to this technology. And every other company in their operations already can start to apply this. Right. While we have discussed a lot about future, let's talk about the present. Rajan, you must have seen the recent GDP data, and I mean, obviously, there was a report also by a famous firm just a couple of days back. All of them are hoping, and even the data indicates that India is in a good place in terms of its growth trajectory. Looking at the macro indicators, what is your outlook? You know, I saw the last data, the last quarter. Sure enough, India is growing, as I see around the world. As I said before as well, that India is at a sweet spot, growing 6% to 7%. I mean, that's kind of the data line that we are seeing. If we have to grow for a faster pace, which we should be growing with the kind of population that we have, India needs to grow at 8 to 10% in the coming few years. And for that, the facilitation of the government side, I can tell you from a business point of view, is extremely important. The way government is coming around to helping the sectors that are defining how the growth will happen. We are seeing manufacturing, which has been a laggard for many, many years. This government has taken upon themselves to bring manufacturing to the forefront. At 17% of the GDP on a manufacturing, moving to 25% is a needle which has to move. But the work has already started. The entire PLI scheme that we see, entire Atmanirbhar we are seeing, this will propel the growth on manufacturing. Services is at 58 to 60%, depending how we see the data, is also growing, but manufacturing needs to keep that pace. India will grow. There is no doubt about that, and I can tell you we've seen the numbers which the reports have alluded to it, not only in terms of the top line, but also on the consumption side, because both have to play in tandem.
Last 3 years have been challenging years for the entire globe, including India. It's a black swan event. But I think India has emerged very strongly out of that. If you see now the data of the last 2 years and the last few quarters is clearly showing that India is on a growth path, which means really the world is looking at India in a very different way. India has become a trusted partner. India has become a trusted source. And we are seeing global changes that are taking shape. Geopolitics has its own way to play. And I think it is very important for India to take that, I would say, pole position today that we have been actually put through into that. And the decisive government that we have today in place, the decisive leadership that we have in place, and the policies that we have in place, I am in no doubt that the growth story, the growth trajectory of India will remain very robust. Vishal, would you like to add? What is your outlook? It is one of the shining spots right now in the world. You know, you look around, there is all this doom and gloom everywhere, except in India. And so, you know, in a sense, there is such a positive feeling, spirit, and incredible work that is happening from across the board in all sectors. The sort of the spirit of entrepreneurship and a can-do attitude. It is incredibly impressive and infectious, you know. So I think in a way, when I look at the future, I see that, you know, in a world that is going to be transformed by AI, by these technologies, India can play such a fundamental role, not only for India itself, but for the entire world. And I think we need to unleash our innovative spirit and solve the big problems that are out there. It is right now our canvas, ours to build on. Right. Very quickly, Vishal, last question to you. Like Rajan also mentioned, you know, we need to eventually get to growth rate of maybe 8 to 10%, looking at the kind of population and looking at the kind of working population that we have. Now, how we can effectively leverage, let's say, technologies like AI, generate enough jobs, educate people about it, and again, sort of emerge as a leader the way we did back in the day in software industry? By training, by education, having a tremendous focus on that, you know, we have to always look at the number of people who can use the technology, the number of people who can build with this technology, the number of people who can actually build the next generations of ChatGPT and GPT-4 and what have you. The more that we can enable these numbers, and we have massive numbers, you know, we are a young country. So I see that the enablement of the skills and the training as one of the fundamental needs and opportunities. And then the creation of the jobs and all of this will follow from there. The world is looking for technology like this. One thing that I feel particularly good about is that the number of global products that are coming out of India has increased significantly in the last few years. It used to be that we provided services to others and so forth, but now we are building innovative products which are global in nature. And I think this needs to be really multiplied and encouraged even more. And so the way it works is, you know, Steve Jobs always said you connect the dots looking backwards. The employment, the prosperity are all consequences of the fact that you have such a workforce that is able to innovate like that. And then, you know, the growth rates and all of these things follow from there. But you have to put the horse in front of the cart, and that is the skilled people who are skilled in next generations of capabilities. Right. Mr. Mittal, last question to you. Like you mentioned, eventually we need to get to 8 to 10% growth. It's a desirable situation to have, but not very easy to achieve. And considering that we'll be getting into the general elections next year. So, I mean, what are those 2-3 steps that we immediately need to sort of take in terms of reforms, which can kickstart and sustain the investment cycle and the jobs market? You know, I think from global headwinds, as we see, there are some challenges which will remain on the table till the time the entire geopolitics is settled, which will take its own time, because we are seeing Europe is challenged,
UK is challenged, US is growing, the Chinese have their own play. India is growing at a speed that is little probably slower, but we are moving in that direction. And I don't think so elections will have any impact, at least I see from the industry point of view. This government I've seen works till the last day, and there's no reason for them not to. And the reforms, I can tell you, have been from all sectors. This government is very friendly. We see the FDI policies, which are very friendly. I don't think so there's any other country that today we'll see which has the growth that we are seeing, the consumption of the society that we will find of the generation that we have on the young generation that India has. So we have this story quite built up there. The manufacturing piece has to kick in. I think that's important, and we are already on that direction. So clearly, I don't think so that as we speak of this growth in the coming times, India is very much ready from reform side, from policy side, from decision-making side. Entrepreneurs are investing. Some private capex investment is a little slow, but I think we are seeing it's inching as we see the last report. Government has invested a lot. The private sector will also now start kicking in. I think we're all set there for a growth which should be far exceeding in the coming years. Absolutely. Let's hope for the best. Ms. Mittal, thank you so much for joining us. And Vishal, thank you so much for joining us from there. Thank you. Thank you. Thank you so much, Mr. Sikka, Mihir, as well as Mr. Mittal. Well, let's move on. And ladies and gentlemen, just a very quick reminder, do share your thoughts and suggestions on our social media platforms, Facebook, Instagram, Twitter, all of our channel handles, and do tag us in all of your comments, your pictures, your selfies, all of it. Do use the hashtag TNIEC. Now, our next speaker, ladies and gentlemen, has had a very illustrious career wearing multiple hats. He has served as the Secretary of State under President Donald Trump, and prior to that, he has also served as President Trump's CIA chief. In fact, before his time in the executive branch, he has also been elected, for many terms in the Congress representatives as well, in Kansas, in the 4th District. And before that, his time in the government, he also founded an aircraft part manufacturing firm called Thayer Aerospace in Kansas. He has a degree from Harvard Law School, served as in the US as well as the Chief of Tank Platoon Leader. He also received many reactive duty military services as well, and he was rank of the captain and a graduate first in his class. His career, ladies and gentlemen, has had many medals out there. In fact, I would now like to call upon stage then and begin with our next panelist. After, of course, taking up his degree from the Harvard Law School, he also served as the U.S. Army Tank Platoon Leader, retired from active duty military service with the rank of captain, and graduated first in his class at West Point. His career, of course, has seen him lead men in West Berlin during the Cold War, lead a machine shop floor in Kansas, and most recently lead the CIA and the Department of State. Ladies and gentlemen, you'd agree with me, that's been quite a journey, and we can't wait to hear what he has in store for us next. Ladies and gentlemen, please welcome, and a huge round of applause here, the 70th Secretary of State, the United States of America, Mike Pompeo. He's going to be in conversation with the MD and CEO of Times Network, M.K. Anand, and the theme for this discussion is going to be India, the emerging third superpower. Anand, may I please request you to felicitate our guest with a token of appreciation. Thank you very much. Thank you. Thank you. Very kind. Thank you. Thank you. Yeah, of course. Yeah. All right. There you go.
Good afternoon. It's indeed our pride, privilege, honor to host this great personality over here. I mean, he's unique in the sense that he has been the director of the CIA and Secretary of State. I don't think anybody else has done that in the long history of the United States. But before that, he's an Army graduate, a rank holder from West Point. He's a rank holder from Harvard Law School. He's practiced with a law firm. He started his engineering firm, and he's been a successful entrepreneur. He did business in India. He ran for Congress. And finally, he was on merit picked up into the Trump administration, and then he's done some fantastic work globally, which we are seeing even now some of those policies continuing, and many of them sort of great value to India. And therefore, we thought on this emergence of India as a superpower in a multipolar world, who better than to speak to Secretary Mike Pompeo. Thank you, sir, for coming. Great, thank you. Thanks for having me here. It's lovely to be back in India. I think this is the 20th or so time that I've been here. As you said, a long time ago when I was a much younger man, I operated a business with a partner here in Hyderabad, in Madras, where we made machine parts for HAL. And so I was here a lot. My wife and I both love Bangalore and came to really appreciate this country a great deal, long before anybody knew who the heck I was. Thanks, sir. So, Mr. Secretary, I'd like to start with a broad question. During your time as Secretary of State, it seems that US-India relations underwent a paradigm shift from where we see it towards much greater cooperation at every level and much greater level of trust between our two countries. I think, all of us here, we looked at US as, a formidable player on the global stage, the preeminent superpower, but we always looked at it and said, it's nothing much in it for us because, we're not very sure how we aligned. But that has changed in the last 1 decade. I mean, of course, there are other things that have also happened before that, but very, very specifically post the Trump administration, we see those changes coming up. How did this shift come about, Mike, in your eyes? Yeah. So look, I know the history, the post-World War II history. We were both joking before that we were both British colonies at one point in our national history. But we came to understand in the Trump administration, and I think this was underappreciated. So everybody knows the headline, right? America first. And that was off-putting to some. I completely get why folks would think that. But President Trump and I both, we wanted the Indian people to put their country first. We wanted every nation to do the things that mattered to them. And for us, one of the things that mattered to us enormously was to recognize the world as it really was. And the world had shifted post-World War II dramatically, right? We'd had 70-plus years of relative good order, but this had shifted. The power structures in the world had shifted, and India was now an important power in the world stage. Not a power that was soon to be important, but one that was important while we were there, to today as it exists. I still believe this with all my heart. And so we worked our tails off to build that relationship. It was complicated. Trade relationship between our two countries, complicated. But we recognized that for America to be successful, for our people to be more prosperous and secure, we needed to have deep economic relationships between the United States and India, deep security relationships between the United States and India too. And when we did that, we'd have good diplomatic relationships, and we would collectively be able to build out the next 75 years of a prosperous globe as well. And so it was deeply in our interest to do it. We were determined. We were very fortunate. We had Prime Minister Modi. We had a great counterpart while we were in office. There were other places we tried to do this kind of thing, but we didn't have as good a counterpart. So we were very fortunate. The timing was right, and I'm proud of the work we did to build out both our bilateral relationship between the two countries and our relationship with other partners in the region, including the Quad, which had begun to become very effective at protecting each of our two countries. Yeah, so that brings us to this. The good thing is that post the Trump administration, the change seems to have persisted with a new administration which came in. And, this whole thing about alignment in the Indo-Pacific. So what is the future vision for Indo-Pacific? How do you think it
aligns with India's interests? Well, we all have to form our own judgments, but from the American perspective, the great challenge of this next generation is the threat that's posed by the Chinese Communist Party. If you said, what's the singular greatest geostrategic risk to the next generation of Indian kids not having more security and more prosperity, that risk comes from Xi Jinping and from the Chinese Communist Party. You all see it, you're closer to it than we are geographically, but we all experience it economically as well. And this has been something that we want China to succeed economically. We're happy competing with them, all of us should be, but Xi Jinping intends something that is fundamentally different from that. And so when you begin to think about the Indo-Pacific, we tackled it in three pieces. First, we needed a deeper, important set of relationships with broadly Asia, including the Middle East. And so we worked what became the Abraham Accords to try and take down the tension in the Middle East itself and to confront the strategic threat that came from the Islamic Republic of Iran's regime. And then second, we needed to build out with our friends in Australia, South Korea, Japan, here in India, a set of relationships that were economic and military, the set of capabilities that made clear that we were determined to protect the things that really mattered: basic property rights, human dignity, all the things that democracies do the best, but that every nation has a responsibility to protect. And so we were trying to build a construct. But by the way, Pacific Island nations, I don't think I mentioned. We were trying to increase the set of economic connectivity between those countries in a way that would convince the Chinese Communist Party that on the world stage, it could have its place. It has over 1 billion people, but it had to conform to the basic requirements of international norms. If you want to lead in the world, it is not okay to hold 1 million of your own people in internment camps. If you want to lead in the world, when a virus breaks out in one of your laboratories, you need to invite the world in to help you solve the problem, not lock down and shut down and lie and obfuscate. That is a global requirement to keep the world safe. We had 7 million plus people die across the world because the Chinese Communist Party chose at that moment not to let the world help them figure out how to address this issue. Instead, they disappeared journalists, sent people on airplanes to Milan. I mean, this is not how world leaders behave. It's not how the Indian government would have behaved. It's certainly not how the American government would have behaved as well. And so when you think about the Indo-Pacific, this is to get the world right for the next 75 years is an imperative that those of us who believe in the most fundamentally important things in the world work together to address those problems and demand that other nations comport with that type of behavior. How they run their internal workings, there'll be differences, but the way that we engage in the world, if you want to lead, it requires a certain set of understandings, not the least of which is basic decency and the rule of law. So despite good relations between our two nations during your time as Secretary, a comprehensive trade deal eluded us. In your eyes, what roadblocks remain in that deal, even now? What needs to change in order to make it possible? Tell me what you mean. Explain what you mean by the question. The U.S.-India trade deal. I mean, oh my gosh. Look, every country wants to protect the things that matter to it most. We're guilty of that as well. And I don't fault nations for wanting to protect jobs and create wealth in their own country. We simply know that the cumulative well-being of the globe depends on massive interconnectivity. And we have that between our two countries. There's lots of foreign direct investment by the United States here in India. I hope there will continue to be more. There is significant investment by Indian companies. I think the next $1 trillion company is likely to come from here, likely to come from India. We see it, by the way, we see Indian students coming to learn. We see Indian Americans running some of our biggest companies in America. The connectivity between our two economies is deep, and we ought to figure out a way to get our trade people to figure out a set of pathways to increase both the trade between the two countries and how our currencies interact with each other in a way that makes good sense for each of our two countries. I think it's possible to do. So the U.S. has taken a much tougher approach to terrorism since the last 20 years, and it's been the same, was even tougher under the Trump administration.
However, the hasty exit of the US from Afghanistan and other recent developments in terms of the Iran issue and Pakistan, the threat for regional and global terrorism is higher than it has been in years now. So how do you think US and India should collaborate now to take and meet this challenge? Yeah, two thoughts. First, the debacle that was Afghanistan is something that has harmed America's a lot of risk associated that comes with that statement to work in important ways. America has the responsibility to continue to lead in the world. We need to do it with our friends and allies, but we are going to, frankly, because other countries have underinvested in their own security, especially in Europe, that responsibility often has fallen to the United States, and we ought to take up that responsibility in a serious way. Yeah, but years of investment in terms of time, people, and money has built a sort of a credible security umbrella. And I know, I mean, why would you pay for it? But the fact is that was an asset. This hasty withdrawal, I'm sure you know that would have hampered or spoiled that imagery about the brand imagery equity that America had. Yeah. So I think from where we see it, I'm not talking of India because that won't be the kind of relationship that we have, but many countries in that region and other region would probably trust America a little lesser because of that withdrawal, I think. I don't think there's any doubt about that. And just in every facet of our lives, we all know this. Trust is easily busted, easily broken, and really hard to rebuild, and almost always can only be rebuilt through time and demonstrated effort through time. And I agree. What happened in August of 2021 in Afghanistan will take the United States a while to build back from. I think the other takeaway from that is I think for the American people, they came to see that, there's times when there's something you'd really like to see happen, but one needs to measure twice and cut once. And so we got that wrong. I pray that we don't have a mistake of that magnitude again. This isn't political at all. I wish the Biden administration had done more faster in Ukraine. I don't think we'd still be having Ukrainian kids killed, even as we sit here today, had we led that effort more quickly and more robustly. And I think, frankly, the failure in Afghanistan gave Vladimir Putin the idea that, boy, he might just be able to roll through Kherson and Kyiv all the way up to the Polish border and maybe beyond in a way that reflected the failure of America in Afghanistan. Yeah, so I think that is something that is obviously hypothesis. Right now, if you were, if your administration was there in power, how would your reaction be with reference to the Ukraine situation? Yeah. What would be the differences? In the end, security depends on deterrence, and deterrence follows directly and almost solely from perceived risk. You have to convince Vladimir Putin that the risk exceeds the benefit of continuing what he's doing. How do you do that? The answer is we shouldn't have dribbled out HIMARS. We shouldn't have slowly provided increased intelligence.
We shouldn't have said we'll deliver armored vehicles. We, collectively, the West, will deliver armored vehicles over months. We should today not be withholding the continued resupply of the tools and equipment that they need. We should be providing them everything that they can deploy militarily to convince Vladimir Putin that you have to end this assault on the basic fundamental ideas that have built this world for the last 70 years. I don't think anybody should doubt Vladimir Putin's intention wasn't Kyiv. Kyiv was a waypoint along the way to control of even greater chunks of Europe. And we collectively must push back against that. We talked a bit earlier. I hope India will come to see even more robustly that it's in its best interest to make clear that what's happening in Europe today is unacceptable. The invasion by a large country they perceive as vulnerable, crossing its borders militarily, is just simply unacceptable. And we know this is a tough region, and we know that Xi Jinping is watching what's happening in Ukraine. And make no mistake about it, every nation has a responsibility to, at the very least, make clear precisely where they stand, precisely what they find acceptable, and make sure that those nations that are supporting the aggressor, those nations that are supporting the country that has conducted what will, I think as we unpack it, certainly appear to the world to be war crimes. Those are the kinds of things that the good nations just can't accept, and we ought to call them out, and we ought to do all the things that we can. Ukraine hasn't asked for a single American soldier. They haven't asked for a single sailor. They simply said, help us with the equipment and tools we need, and we're prepared to fight for our own country, and they have. And that has been successful to date. I pray that it will continue to be. And had we done more collectively, had we done more faster, I don't even mean since February. Everybody thinks the launch point for this was February 2022. This began in 2015, right? Putin invades Ukraine by taking Crimea but in the 2014-2015 time period when it's culminated. For 4 years he doesn't, and then he goes after it again. We lost deterrence. We didn't threaten Vladimir Putin's security in a way that said it will be unacceptable to do this. And the result is that you see a land invasion of Europe in modern times, something I think most of us had prayed was ancient history. So that brings us to the other side of the Eurasian continent, Taiwan. U.S. House Speaker Nancy Pelosi's visit to Taiwan in 2022, and whatever has been conjecture or spoken about or debated about the parallels between China and Taiwan and U.S. Russia and Ukraine. So what do you think is the evolving U.S. stand on the Taiwan matter? Oh goodness. I don't know exactly what the Biden administration's posture is. It's been a bit confusing. But I'll give you my assessment. Xi Jinping has made clear, but there should be no doubt in anybody's mind what Xi Jinping's intentions are with respect to Taiwan. He uses the term reunification, although Taiwan has never been part of the Chinese Communist Party's power. Second, he has a timeline, and we don't know what that timeline is. So he'll get to play his hand. We should collectively play ours, which is enormous economic might, enormous power. We should provide the Taiwanese today, not 6 months from now, not when the Chinese PLA is invading the island or when the Chinese Communist Party's Air Force is flying around or the Navy blockading the island. We should provide them today the tools that they need to convince and deter Xi Jinping from taking aggressive military action against Taiwan. I'm convinced it's possible to do. This is not a fait accompli. Xi Jinping simply, just much as we failed to deter Putin, we have to deter Xi Jinping from an attack on Taiwan. I'm convinced that we collectively can do that, but it can't just be an American effort. It's going to take all of us who believe that that would be a bad outcome. And I would share for everyone in this room, a military conflict in Taiwan is a global economic catastrophe. Certainly because of TSMC, the massive semiconductor facility that sits on the southern end of the island, but also because it is nearly impossible to imagine that this is contained with a conflict between China and Taiwan.
It is difficult to imagine how Japan does not become involved. When Japan becomes involved, we have a treaty guarantee with Japan. This gets big fast. And so the central idea of deterring Taiwan is essential, not just for the Taiwanese people, but for all of us who want a continued set of economic relationships that permit the next generation of people and the next billion people in the world to be fed as well. So as you know, Mr. Secretary, India has essentially been in a frozen conflict with China since the border conflict in 2020. So we have a border problem with them also. You have been extremely vocal about the challenges presented by China's rise. How do you see India's role in meeting the China challenge globally? What are the strategies that you see as successful? And before that, what do you think this frozen conflict will how will it evolve? Goodness. So I was in the middle of it in 2020, working with your government as the Chinese were attacking Indians on your northern border. Your folks did an amazing work. You should be very proud. Myself and Secretary Esper were pretty good too. We provided, you asked, we answered as quickly and as fast as we could with the things that you all said you need to not only repel in the moment, not only for the tactical moment, but for the things you needed strategically to prevent China from continuing this indecent onslaught on India. And so, you know, it's still, as best I can read, I no longer have access to classified information. As best I can tell, it's still pretty tense in the region. I don't think Xi Jinping has changed his view that he'd like to continue to literally move the goalposts in the region, and you all should be vigorous in defending the things that are yours, the sovereignty that is yours. More broadly, that India's role isn't something, sometimes I hear people say, well, what should India do in the future? It's today. We're living this today. This is a real-time activity. The Chinese Communist Party's effort, we see it with the debt that sits in Pakistan and their efforts to control Pakistan. We see it in Africa, with their efforts to use their money to exert political control all throughout good swaths of southern Africa. The time is now. The time is for each of us. This is an economic conflict. I described the Chinese Communist Party have been at war economically with the United States for 40 years. I think that continues to be the case. And so what India should do is continue to grow and prosper. It should continue to provide for its own security. That's both building its own national security systems along with its partners in the region, but also the work that's being done to build up your defense industrial base here is absolutely vital. You're becoming a significant exporter of systems to the world. I think that's really important. It'll create jobs and wealth and prosperity here in India. That is fantastic, important. You can't have a secure nation without a prosperous economy, right? My most important tool as Secretary of State, it mattered that we had a really good Navy and a kick-butt Army guy, I could say that. But what really mattered was that we had the American economy and the fact our capacity for innovation and creativity, just as you do here in India. And so if you said, what's the absolute most vital thing that India can do to confront the Chinese Communist Party is continue to grow and to build your economy and to educate your people and to train the next generation of technology workers and manufacturing workers. All the things that create wealth and prosperity will be the same tools that will convince Xi Jinping that continue to threaten the world's not in his best interest. Those are the ways that we do it. It is the twin pillars of economic might and a military capability that go hand in hand to create the very deterrence that the world needs. So we've been hearing about the China Plus One policy that the world started pursuing, I think, for the last 10 years. And post-COVID and during, India is seen as a very, very big beneficiary of the same. So what is your take on this approach, the Plus One strategy? You know, I talk to lots of companies around the world now that I'm now an unemployed former diplomat. They all can see the risk of investment in China today in ways that I don't think they fully appreciated. And frankly, the conflict in Russia,
I think, brought that forward. I can't tell you how many American companies, I'm sure Indian companies as well, had to write off significant assets inside of Russia. The balance sheet risk to major American companies inside of China is even greater today. And so they're all trying to figure their way through it. They are hopeful, as am I, that China will change its behavior and change its course, but they can see that the political risk is real inside of China. And so they're trying to figure out places to go. India's an enormous beneficiary. Vietnam has been an enormous beneficiary. Frankly, there's been onshoring to Mexico and Canada and the United States as well. As nations are trying to rebalance, we talk about it in terms of supply chains, but it's not just supply chain. They're trying to rebalance their political risk around the world, and India is a wonderful place for them to do that. They can see it. They know that you are a reliable economic partner of the United States, and so I think the Indian economy and the Indian people will continue to benefit from that. Just one more question regarding China, and this is in the area of the technology war, which is seems to have slowly started to take off between the US and China in certain critical areas. I mean, of course, critical components of semiconductors, they are, but there is artificial intelligence and a whole host of areas that there is going to be a sort of a tug of war which is happening. So what's your take on that subject? So there's two pieces to this technology set of issues. One is we should acknowledge that China is a very capable technological country on its own. In its own universities, they're very capable. They're not very deep. They're not deep in the same way that the United States and India and Europe are in technology. And so they continue to be very dependent on the West for a great deal of technology as well. We should prevent them from having access to technologies that they intend to use for military purposes that threaten the world. And that was our mission set in the Trump administration. What became known as the CHIPS Act was something that I started along with our Secretary of Commerce, Wilbur Ross, where we began to recognize that we had a failed capability. We no longer could manufacture semiconductor wafers at a cutting-edge level inside of the United States, nor could any of our partners. This wasn't just about U.S. manufacturing. This was, do we have a reliable set of partners that can maintain access to this technology in the threat of a conflict, and the threat that China should somehow be able to control the flow of that particular technology. And so we began to look at this more broadly, including the efforts to build out the next generation of reduced carbon vehicles. And we could begin to see there were places inside of China where we didn't have access to the things that we would need. And so we began to work with India, with other countries around the world, to develop a set of alternative capabilities to make sure that we would never lose the capability to have the technology that we needed at the most important time, nor would we continue to suffer blindly, as we did for decades, the Chinese Communist Party stealing our technology, manufacturing it in China, and then dumping it on the world in ways that harmed American workers. And so those were the pillars of how we tried to think about technology, and I'm pleased that the Biden administration has largely continued this. I wish that they'd be even a little more aggressive in protecting this technology that matters so much to the Western world and to democracies across the globe. So here's a question which probably sort of we will look at from your understanding from your days with the CIA. We're talking about our neighbor, Pakistan. Growth has stalled and inflation has soared in that country of 220 million people over the past 1 year. With the rupee sharply depreciating now, the Pakistani rupee, and reserves of currency dwindling, that country is struggling to import essential products like food, leading to stampedes at distribution centers. Fears that Pakistan would actually default on its debt have lurked for months. Then there is a very unlikely situation in Pakistan where there is a political leader who's suddenly sort of risen, way beyond anybody else has in recent times, as a person who's able to, ignite the imagination of the people at large. And there has been visuals which come out from there, which are, looks like a major, revolt against the power structure which has been there for the last 75 years, actually, the Pakistan Army. And it's the first time that we're seeing the Pakistani people out in the streets calling their army names, in language that we can understand. Probably you will not be able to relate. The slogans on the street are pretty derogatory of the army. What do you think? What do you make of the
turmoil in Pakistan. And what do you think of what will happen, what is good, and what do you think the future is for Imran Khan versus the army? The army is an incredibly powerful force inside of Pakistan. I saw this when I was the CIA director, working with the army, doing our best to deal with their intelligence service, the ISI. This was, at our time, all while we were trying to manage the conflict in Afghanistan as well. Our most frequent conversations with the Pakistanis were along the Fatah, along the border there, trying to prevent terrorism here in India and across the world. So that was the focal point of our work with Pakistan. If you'll remember, it would have been early in our administration, maybe it was 2017, when we cut off all foreign assistance to Pakistan in an effort to get them to conform to global norms, to get them to behave. The Chinese stepped in, loaned a ton of money to the Pakistanis. Good luck getting that back. When I think of Pakistan today and I observe what's going on, what the world needs is a more stable Pakistan. What they've done to Khan is inappropriate. I hope they will follow their own internal rules, much as we have. If you have the rule of law here in India, we have it in the United States. Pakistan has a history of this as well, but it has ultimately been dominated by their military. I expect that will continue as a practical matter to be the case. What we should all do is we should make clear that China's role there has been a net negative for the Pakistani people. The things that they have offered them, the money that they have loaned them, will ultimately give the Chinese Communist Party power over how Pakistan governs itself. That's not good for the Pakistani people. It's not good for this region. And then second, and this is too long an answer, but there are tools that we all can use to decrease the likelihood of what you described, a collapse or chaos inside of Pakistan. Very high-end set of capabilities, 200 million plus people. A collapse of Pakistan will increase the very risk that we began this conversation around, the risk of terror, the risk of Islamic extremism flowing from there into other parts of the region. It would be a very bad thing. And so we ought to collectively, India will have a role in this, play the role to try and deliver the very stability. Even if we don't like the exact outcome that we get, it wouldn't be our choice for how Pakistan is governed internally. That stability matters an awful lot. And if you put India first or America first, it is Pakistani stability which should be at the top of our list of things we hope come from that place. Okay. And you think Army would be a very important player in that? It seems very unlikely to me that we're ever going to see the Army be unimportant in Pakistani government in any near-term period. Look, I hope that we all want civilian rule there, right? This is what we aim for in each of these governments. I hope, and Imran Khan began that process. I hope that we can find a way that civilian institutions, voters, democracy, rule of law will find an ever-increasing pathway there. But today, it's clearly the case that the military still has a dominant role in how affairs are governed inside of Pakistan. Then we go to the next, Pakistan's neighbor, which is Iran, and developments post the Trump administration the last few years, and the looming and increasing threat now of that they may be close or much closer to nuclear, weapons, and Israel's reactions to that. So, what is U.S. Your take on that subject, sir? Look, India has a very important role here. It's your neighborhood. The Ayatollah is the destabilizing force in the Middle East. If you look at if you look at the risk, the security risk around the world, it is Hezbollah in Lebanon, it is the Iranian militias in Syria, it is the Houthis in Yemen, it is the Iranian knuckleheads in Iraq. Right? These are all underwritten by the Ayatollah and the IRGC. This is the malign influence in the region that creates real risk. We were very clear about that, and that's what enabled, for the first time in decades, multiple countries to make peace with Israel. This is right. This was like, people said, "Oh, you can't do this. This is impossible." Well, we did. It happened. It happened because we were grounded in reality, and I'm confident you all will be too. I'm confident India will be grounded in reality too. We should accept the reality that
the Kingdom of Saudi Arabia, the Emiratis, the Kuwaitis, the Bahrainis, the Omanis. These are good people who want to live in peace and grow their economies and take care of their own people. And the Ayatollah wants to wipe Israel off the face of the earth and would just as soon take America out as well. You should note I have a big security team. The Iranians continue to try to kill me every day. This is not how normal nations behave. And so the Biden administration got this one totally wrong. The Biden administration thought if we negotiate with them, we appease them, we allow their economy some slack, then they'll behave normally. I would tell you that history suggests that the Ayatollah has no intention of behaving in a way that is in the best interest of the Indian people or the American people. And so we ought to go back to a policy that punishes the regime, helps the Iranian people get what it is they deserve. This is a nation of 80 million people, brilliant history. The Persian history is remarkable. We should promote them, give them the space they need, and one day Iran will join the community of nations trying just to make things better for their own people as well. But the Ayatollah or any head of a theocracy would behave the way that he would, because I mean, they look at all the Shia people all across the globe and countries which have those people as natural, as within their border. Yeah. So I think that brings me to the question that we, talk about in democracy, US, India. There is a feeling that there is, some sort of a religion getting mixed into society a lot more than earlier. The whole, talk of the left and right and the serious amount of schism in ideologies. So what is your take on this subject across the world? I'm not just talking about Iran. I mean, there is Turkey, there is the US, there is India. Sure. I mean, there is talk about, sure, most people from abroad. I think I was talking to the World Economic Forum president a few days back, and one question that he asked is, we hear about religious persecution. I said, I can't see it, but obviously that's the kind of thing that people are talking about. Why do you think this is coming up? I mean, social media and all that. I mean, just... Oh, goodness, that's not new, right? That's been around a long time. Let me start with Iran for a second. The Ayatollah is not a religious leader. He's a terrorist, right? He considers himself a religious leader. Right, he's a we should be very clear. The Shia people are good people. This is not religious zealotry. This is a kleptocracy, right? This is a desire to remain in power and steal stuff from the people. This is not remotely connected to Shiism or Islamic faith in any way whatsoever. He uses this as a rubric to continue to terrorize not only the world but his own people. Second, this idea of religion permeating government is not new. We discussed it a lot at our founding a couple 150 years back. For me, I'm a Christian evangelical. My faith is an important part of who I am. But we govern as a nation that understands religious tolerance. And I hope every country will do that and get that right. It is absolutely imperative that we permit religious freedom to expand everywhere. We'll all think about this differently inside our own governments. But places that are more religiously free are more prosperous. And I hope every nation will find its way through to doing that. Government should never turn to use church to suppress others. I watch what's happening in China, where 1 million Muslims are being held in the western part of the country. And for all the world, when the world sees what's taking place there, it will remind you very much of internment camps that we all know from the 1930s in Germany. This, by the way, it's not truly about faith. It's about dominating an ethnic group. It's indecent. And so I hope every country will come to understand that governments have a responsibility to permit people of faith, whatever faith they may be, to observe their faith in the way that they want. I actually think the world is headed in the right direction with respect to this. I think certainly the headlines here in India don't reflect the reality of the religious freedom that exists in so many places in the world. And we worked hard in the Trump administration to try and help nations expand that as well. Thanks. Most times when we talk about India's neighborhood, we talk about Pakistan and China, and we talked about those two parts. What do you think India should do vis-a-vis Iran? So you said India has a responsibility. Sure, you have a responsibility. You should make clear to the Iranian people that you're with them and not with the Ayatollah.
It's really that straightforward. The Biden administration's theory has been to not enforce sanctions in the same way we did. I think in the end, the only way that the Iranian people have a chance to get the regime, the leadership that they want, is if the regime itself is starved of its capacity to build out its nuclear program and to build out its terror campaign across the region. So I would urge not only the Indian government, but most importantly my government, to go back to the set of policies that gave the Iranian people the space to organize and ultimately get the government they wanted. Two questions, last two questions on India. India's stand on Ukraine and the import of Russian oil, what we can look at and say as hunting with the hounds and running with the hares. And that has been a little hot topic, and it's sort of erupted here and there. What is your take on that subject? Yeah. If you feed the Russian beast, it's going to come get you. This is it. If you continue to underwrite a regime like Putin's, he'll have more resources to continue his onslaught. And if there's one thing that the world, I think, forgets, because we've lived in this post-World War II order, I think the world forgets that you can't satiate folks like Putin. If he were today with a puppet government in Kyiv, I don't think for a moment he'd stop there. And it may not be an invasion of France, but his effort to continue to expand his power in a way that is so indecent and so antithetical to the way that you live your lives here in India and we live our lives in the United States, you have to stop these guys. And so if you're purchasing crude oil from Russia and enriching Vladimir Putin, you are increasing risk that 5 or 10 years from now, the world will be in a more stable, more secure place than it is today. I get it. This is hard. I regret that the United States has shut in its energy. But I think if there's one thing the Europeans have learned, is that you are not going to run the world on sunshine and windmills, at least for the next 20 or 30 or 40 years, that we're going to be using fossil fuels for an awfully long time. And that if you are dependent on a bad guy for your energy supplies, the bad guy will come one day to use that in a way that is to the harm of your own people. And I think it is easy to say, gosh, we need this today. Let's look the other way. Fair enough. There's time sequencing to lots of things. But in the end, if you become dependent on bad guys for things that are really critical to your own nation, someday this will come back and bite you. And the Europeans have seen this. I remember so well. We were in Europe in 2017. I was sitting with President Trump, and we were telling the Europeans, if you keep buying all of your gas from Gazprom, something's going to break. And we did not know when, nor would we have predicted that this is how it would unfold. I don't pretend that we predicted this at all. But we did predict that if you continue to prostrate yourself to the Russians, they will come back and use that leverage someday. And I would urge every nation that's thinking about that to have a pathway that disconnects them from being totally reliant on folks who don't share their understanding of the way the world ought to work. And but that's true for our country as well. That brings me to the last question, which is on the theme of the conclave here. India is a vibrant democracy and now the most populous nation on the planet. I think on April 13th, we surpassed China, and that's apparently historic. Never in the world's history has China not been the #1 country. And from the way the population rates are, I think we can look at the next maybe even 500 years that the population of this part will probably be the largest in the world. So this is a historic change for the planet. It is also probably the first time that in the top powers of the world, when you're talking about this kind of a size, because you were the champion of democracy when the USSR was an autocratic communist nation, China is a similar model. So this is the first time probably that stature, another democracy comes in. We call it the democratic dividend. What would be your opinion, advice, and if you were India, how would you conduct yourself from here on going forward for the next 20 years? Oh my gosh. I have spent my whole life not telling other countries how to run their country.
and been pretty successful at avoiding that. But you're absolutely correct about this. Right? Think about this. The next big country will be Nigeria in terms of population. The demographics are pretty clear about the direction of growth for 20, 30, 40 years. I'm not sure I'll predict out to 500. My thoughts always come back to this. The greatest driver for happiness for peoples are economic well-being and health. And so that often turns on GDP per capita, right? That often turns on how many resources are available for individuals. And then there's a component of this that is how broadly they are shared too. So there's a equity component to this as well. Do you have a system that allows for mobility, for people to rise from poverty, to create wealth, and to take care of their families? I wouldn't limit this to India. I urge leaders all across the world, be focused on the well-being of your own people and their economic success. It is easy to become subject to very powerful influence inside of your own country. The 10, the 50, the 100, the 1,000 people who exert enormous economic influence. As leaders, you have a responsibility to make sure that you are delivering on behalf of a sovereign, on behalf of a nation. How do you create the chance for someone like me, who grew up in very modest means, to get this crazy chance to be the Secretary of State of the United States of America? Literally, if you would have met me, and maybe some of you did, when I was doing business here in Bangalore, and I had told you I was going to be the CI Director and the Secretary of State, you would have put me in an insane asylum, right? You would have said, that's crazy. Build a nation where people get those kinds of chances, where hospitals are good and the streets have sanitation, right? These fundamentals. In America, we get caught up on things that happen in Washington. All the news that you see on CNN or on the BBC, the headlines are almost always from Washington. Folks, most of America doesn't give a rip about what's going on there. Most of America is doing what we do in Wichita, Kansas, trying to take care of their family, coaching their little league team or their kids' soccer team. Right? These are the things that build great nations. These are the things that will let the 1.4 billion people here in India view themselves, as you rightfully should, as a successful peoples, as a successful nation, and one with glorious opportunity that sits in front of you. A focus on the things that matter, the things that are local, the things that you can have an impact on. When we do those things, our leaders, your prime minister, our president, they will see that, and then they can help build. They can help build out these geostrategic solutions that put your country in the right place and can continue to build India as a powerful force for good in the world. And I can see that today. It's not something that's 10 years off or 20 years off. I can see that today. Whenever I would come visit here when I was in government, I felt a peace when I was here, right? A people who sought a amicable, peaceful way of moving forward, but were deadly serious about growing their own business or their own economy. These are the things that will provide the world with the stability that it demands in these incredibly challenging times. Thanks a lot, Secretary. It's been really, really a pleasure talking to you, and we really thank you for the trouble that you've taken, taking so many flights. It's all good. And almost missing one, as I'm told. Thank you very much. It's all good. Thank you all. Thank you. Thank you so much, Mr. Pompeo, and thank you, Anand. That was a very, very candid conversation, to say the least. And on that note, ladies and gentlemen, we're going to be breaking for a quick lunch break, but do join us back. We've got many thought-provoking as well as power-packed lineups up next.